Hei hi Akashvani lungleyani kan program hi frequency modulation megahertz azale pakhat point pakwa changa puan chwani vo in February ni som thole ni ta na kan hun voi ni na kan lo chanta apuang tu ar lengil nei control room in charge lalrem ruata sailo ngai thatu te sibayole ole tu na chuan kan hun man dan tur duan lo kan han puange daruka hian chansin thar hindi apuan deli mi kan la chongang daruk le minute nga a chansin thar vek sap tunga puan deli mi na chunjom nga daruk le minute som fangnar moi huna e chi zo sang liani PBK lian khumale leldu sakite anon sayang daruk le achan ve a chanchin thar mizo tunga puan aizola mi kan la chonga daruk le minute somli thokrim ti o kisan wani huna so thing hwan nei tu si zachama kholai lunga mi komna kan ngai thang dar sari le minute som lunglen lengzem phla huna Elizabeth Zodin puyi Joseph Zai Ming thangale lerin tengi zong te te anon zayanga dar sari le minute som thum panga meiche huna meichia ten khotlang rongbol a ti ve tur kan neim ti thu Gracie Lalsiam thangi le f lalyan nguri lunglon lungle mi te anron soyang dariata chanchin thar hindi apuan Delhi mi kan la chonga daria le minute soma chanchin thar vek daria le minute som panga a chanchin thar vek saptunga puan Delhi min na chon zomang daria le achan via chalai te hun kan manga Rimoy le mizo chalai te ti thu pui mangin larin fali haw nar le achian te bazar veng lunglei ami ten anron soyanga dar kwa mara la huna ECM kaushan zai po sia ha te larem kan ngai thang dar kwa le minute som panga a spotlight Delhi mi kan la chonga dar kwa le achan via da film hun kan mangang zandar soma parliament question ar Delhi mi kan la chonga dar som le minute som nga paruka voina tana kan hun voi ni na atopang naktuk February ni som pakhat ni lai ni jing daruka naktu ka tana kan hun voi khat na kan tran lenga daruka chansin thar hindi apuan Delhi mi kan la chonga daruk le minute nga a chansin thar vek saptung apuan Delhi mi na chunjomang daruk le minute som zai moi zai pol larem huna is phailing bia zai pol ramzotlang ko shan zai pol tele sel hok pastor bia zai pol te larem kan ngai thanga daruk le minute som li panga lunglen lengzem phla huna Bimal som tuangi lalung mon le jeni lal mon puite anon sayang dar sari a kan dar thalang hun kan mangve thunga dar sari le minute som panga meichi o a lalun sangi zo hnuai lung leimin hun aron manganga chumi zo le ro pui patsual zai kan ngai thave thungang dar sari le achan via chanchin tharmi zo tunga puan aizola mi kan la chonga dar sari le minute som li poem of the day ya MC lalrem ruatlu e class 6 BS economy hun aron mangang dar sari le minute somli panya dai film hun kan manga dar le minute somli sul nu le lunglen huna lalnun moi le sailo thangi sailo te zai kan ngai thang dar kwale minute soma naktu katana kan hun voi khatna atopang ole tu chi jong su kan hun man dan tur twan lo kan puan theite chu ni a kan puan tak te kha thil chul bi ka chuan ti danglam the ni Akashvani lungle daruka hian chanchin thar hindi puan Delhi mi kan la chongang गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा अब देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए सरकार के कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्रालय स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, CBI, NIA, ED, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग
सचिवालय, IT मिनिस्ट्री, RBI और न्यायपालिका, ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। उन्होंने देशवासियों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गृह मंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण नहीं के बराबर होती है, वे विलुप्त प्राय भी होते जा रहे हैं। ये चर्चा इसलिए है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर्यावरण संरक्षण पर बहुत जोर देती है। और श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण मात्र पेड़ लगाना और प्रदूषण खत्म करना ही नहीं है, लेकिन एक संतुलित पर्यावरण के निर्माण के लिए हमें उन कीट पतंगों और जैव प्रजातियों के बारे में भी जानना चाहिए जिनकी भूमिका हमारे पर्यावरण में बहुत अहम है। श्रोताओं, एक समय था जब हमारे गांव, जंगल और यहाँ तक कि कुछ हद तक शहर भी एक बेहद खूबसूरत कीट की वजह से रात के समय जगमगाते रहते थे। वो जरा सोचिए, क्या नाम है उस कीट का? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। उसका नाम है जुगनू, जिसे हम अंग्रेजी में फायरफ्लाई या लाइटनिंग बग भी कहते हैं। यानी हिंदी में इस शब्द का अनुवाद करें तो अनुवाद होगा आग की मक्खी। लेकिन तकनीकी रूप से हमें ये जानना चाहिए कि जुगनू मक्खी नहीं है, ये एक भुनगा है जिसे अंग्रेजी में बीटल कहा जाता है। विमलेश जी, मुझे अभी भी याद है कि जब रात के समय ये जंगलों और गांव में चमकते थे तो बहुत ही अलौकिक वातावरण उत्पन्न करते थे। जी, मुझे भी याद है। कितना सुंदर लगता था जगमगाते हुए जुगनुओं को देखना, खास करके वर्षा के बाद। लेकिन अब एक प्रश्न है कि जुगनू जगमगाते क्यों हैं, या उनसे प्रकाश क्यों निकलता है? तो श्रोताओं, इसका वैज्ञानिक कारण है ल्यूसीफेरिन। ये एक प्राकृतिक रसायन है। जब इस रसायन की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया होती है तो ये प्रकाश उत्पन्न करता है। जी, जुगनू के पेट के निचले हिस्से में ये प्रतिक्रिया होती है तो प्रकाश निकलता है। लेकिन अजीत जी, एक और बड़ी रोचक बात मैं बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आमतौर पर प्रकाश से ताप उत्पन्न होता है, जी, जैसे बल्ब, दीपक और भी प्रकाश देने वाले बहुत से माध्यमों से। लेकिन जुगनू के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उससे ताप तो उत्पन्न नहीं होता। जी, मुझे याद आया। इसीलिए जुगनू से निकलने वाले प्रकाश को ठंडा प्रकाश या कोल्ड लाइट भी कहते हैं। जुगनू का जीवन चक्र लगभग 1 वर्ष का होता है। अब एक और प्रश्न, वो ये कि जुगनू क्या खाते हैं, तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं। जुगनुओं का मुख्य आहार है लार्वा, छोटे कीड़े और फूलों का रस। अरे हाँ, एक और बात बता दूं, क्योंकि जुगनू फूलों का रस पीते हैं तो उनके एक फूल से दूसरे फूल पर जाने से परागण भी होता है, प्रकृति खिल उठती है। हाँ विमलेश जी, मैंने कई बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने जुगनू देखे हैं, तो उनका उत्तर था कि उन्होंने पता होने की घटनाओं के पीछे कोई राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है या राज्य विशिष्ट समूह। न्यायालय ने कहा कि ये पता लगाना जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे कोई समानता है या ये आकस्मिक घटनाएं हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों से आंकड़े एकत्र करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इस वर्ष मई और जून के बीच समाप्त होने वाला है। इसके लिए आयोग ने तैयारी संबंधी प्रशासनिक उपाय किए हैं। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद वर्ष 2026 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। साथ ही चालू खाता घाटे के अनुमान को घटाकर 0.8% कर दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि व्यापार घोषणा के बाद भारतीय मुद्रा पर दबाव कम हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। Good evening. This is Akashvani. The news read by Saira Mujtaba. Rajya Sabha today resumed discussion on the Union Budget 2026-27. Participating in the discussion, Shiva Sena MP Milan Devara said, "During this very politically and economically tumultuous time, India stands alone as a rare island of macroeconomic growth and stability." Surendra Singh Nagar of BJP said, "The budget prioritizes increasing economic growth rate, fulfilling people's expectations, and to ensure that in the social sector, all schemes reach the people."
Kanimoy of DMK termed the budget as anti-poor, saying it is detached from the country's economic realities. Later, the House was adjourned for the day after completing today's scheduled business. Lok Sabha has also taken up discussion on the union budget. Taking part in the discussion, Aparajita Sarangi of BJP lauded the government for signing free trade agreements with several countries, saying that India has shown its ability to cleverly navigate in a different and changing world order. Earlier initiating the discussion, Congress MP Shashi Tharoor criticized the budget, saying that the government spending has reduced and tax receipts have remained flat. The opposition has given a notice of no confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla. Lok Sabha sources said the opposition has submitted the notice to the Secretary General of the Lok Sabha. Sources added that the notice will be examined and processed as per rules. Opposition parties including Congress, DMK, Samajwadi Party, RJD and left parties have signed the notice submitted to the Secretary General. However, TMC has not signed it. Talking to media outside the Parliament, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju accused the opposition MPs of disrupting the proceedings of the Lok Sabha. हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है. We had folded our hands and requested the Congress even yesterday, saying that the discussion on the budget has already begun. Names have been called out, even Shashi Tharoor's name was announced. Members from different parties have already given their names and are ready to start their budget speeches, but the Congress does not begin the discussion. Every day they come into the well of the House in this manner and create a ruckus. इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं. Home Minister Amit Shah inaugurated a two-day national conference on tackling cyber-enabled frauds and dismantling the ecosystem in New Delhi this afternoon. On the occasion, Mr. Shah also inaugurated the new cybercrime branch of the Central Bureau of Investigation. He also launched the State Cybercrime Coordination Centre dashboard of the Indian Cybercrime Coordination Centre, I4C, under the Ministry of Home Affairs. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that cybersecurity is now linked to the safety of the country. He said Indian Cybercrime Coordination Centre, I4C, has become an important platform against cybercrime. Mr. Shah stressed on the need to spread more awareness about cybersecurity among the countrymen. Supreme Court today asked the centre to ascertain whether there is a nationwide network or state-specific group behind the incidents of children going missing from different parts of the country. It asked the centre to collate data from all states. The bench was hearing a PIL filed by an NGO that highlighted the rising number of children who remain untraced across several states. The Election Commission has issued directions for transfer and posting of officers connected with the conduct of Assembly Elections 2026 in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. The terms of these present legislative assemblies are set to expire between May and June this year, prompting preparatory administrative measures by the Commission. In Bangladesh, campaigning for general elections and the accompanying referendum concluded today, ushering in the mandatory 48-hour silence period ahead of voting on Thursday. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres has expressed concern over reports of attacks on journalists and minority community by the military and police ahead of the parliamentary elections in Bangladesh. In shooting, India finished with a double podium at the Asian Rifle Pistol Championship in New Delhi today. India's Akriti Dahiya clinched the silver in the women's 50-meter rifle three-position event with a score of 354.2 points, finishing 4 points behind Kazakhstan's Sofia Shulzenko, who won the gold. And that is the end of this news bulletin. Akashvani lunglei faknari moi. Yang cây rong, cald đàn reng cái tiếng thầy lâu,
ke veng a shuai turin tharau thiang lim nang chau ka thang ber che ikut sakin min kaila ni tinin min shuayang che nang i ong chuareng dang re ka ngai long e tharau thiang lim chu ro nun ne mi shuai la mi kayang che i mangai na top nei lo ka e ko vel swal ki ma hian mi kayang che tharau thiang lim chu ro nun ne mi shuai la mi kayang che i mangai na top nei lo ka e ko vel swal ki ma hian mi kayang che zan in faknare moi huna kan ngai thak masak ber kha mi kayang che ti hlani a aron satu kha e chi zo sang liani ani mi thiang hlim kalna ti hla PBK lian khuman aron sang đi thiêng him cờ mà mong người khá so in gần mà lal pan xoay xe van ram pan tan kal tran me ka chunar si kan chung na van in nuam pan in kan kal me nun na le to na chang e turi kan ken hunin kan lo e ma lim in ram ro rin na he in kong we try kan so in ma ngai na le in rem na i lal pa kan hu in kan lom e ma ama men chuan kan min o fa in nuam pan min kan dal me nun na le lom na chang e turi kan ten hunin kan lom e ma lim in ram ro kan lu cha do ve om ma ira ni na lui ra pha su tuari lal pan ra le lam in kai pi ala in na fa sai kan sa len fa in nuam pan in kan dal me nun na le lom na chang e turi kan ten hunin kan lo e ma lim in ram ro kan lu sa do ve om ma ila na lui ra pha su tuari lal pan ra
le do na chang ye tu ri kan en hunin kan lok e ma in ram ro ui mi thiang hlim kalna ti hlaron satu kha PBK lian khumani adot le tan naldu sakin chu ngei chu katan wanani ti hlaron saang Dai ni len ko athim zwalo na ram wa zan kho thim o to ngai lo na mun wa lung mai chum pui zin to lo na kho pui wa o chu ngei chu katan van alone eng ang tak ni ang mo kan khen ve hun chua lui pui kam moi ta ka lung du ten ne kan in to kan chan dam tu choi moi tu o chu ngei chu katan van ani in chia thiam lo na om to lo na mun wa lung ro lo na ta zalen na mun tu thiên lai ma kan in hliam to lo na o chu ngei chu katan van ani eng ang tak ni ang mo kan khen ve hun chua lui pui kam moi ta ka lung du ten ne kan in to kan chan dam tu choi moi tu ri o chu ngei chu katan van ani Nakina i swan me kan mu ve hun swa mangai na dang song su adai to ang lal ber choi moi hunna katel ve anga o chu ngei chu katan van ani eng ang tak ni ang mo kan khen ve hun chua lui pui kam moi ta ka lung du ten ne kan in to kan chan dam tu choi moi tu ri o chu ngei chu katan van ani kan in to kan chan dam tu choi moi tu ri o chu ngei chu katan van ani le sapla moi tak mai this is just what heaven means to me ti la le lin
moi mai ani a concession rikota alandanin mizor chong thiam tak me letling tu hi juli ming than tluangi ani a asatula du sakila in athiam na samai boxia he lahan ngai thla khi chon ring tu de kan van ne zia hi kanin she chhuak non fo chin hian karing ani tiro ole dot le tan analua e ti hla e chi zo sang lianin aron sang chon ram re kalvari lam tuang chu zo in sakruang dam lai reng om lovin diam pui tua kan swalita chupur chungin chavin tu analua e chon zai renga rel hei silo mangai lo vang in mo ilo tuar le amileng ten an silo lel nun nema kanta na nun lana sira no nu lali swaka kan lalle pathian nei chun ani angel parten an fak nin lo van reng ro pui leile vana ro re tu kha ro an re sa tel na lim pyar kum tirin shen tiran ba analua e thiam tho renga soi thei silo mangai lo vang in mo ilo tuar le amileng ten an silo el nun dema kanta na nun lana sira no nu lali swaka kan lalle pathian nei chun ani lal tu thum pur rai mingaro pui putur ya kin na reng reng kan nei lo i sia elal pa ang sa dong cross tuar na mga min ko na hi analua e chan zai ka re lo thei silo mangai lo vang in mo ilo tuar le amileng ten an silo el nun nema kanta na nun lana sira no nu lali swaka kan lalle pathian nei chun ani Sayon tang moi beram no lal narama kya lan na thi sen zara kala solve anga suram ka then ma chuan cross kong so chu si analua e pum bel kong dang om silo mangai lo vang in mo ilo tuar le amile
Analua e tilaron sa tuka e si zau sang liani ni ole chu ti zong chu salina fakdari moi hun kan man thei chu ania akashwani lunglei atanga puan chwani daruk le achan via hian chansin tharmi zo tonga puan aizolami kan la chongang Here to Cilian sang puya Governor General Retired Vijay Kumar Singh and Wayne Khan Lamola Leslie Good San Samni Puruko Hong Mizoram Aran Voldo de Tan Animal Insurance to Agent Petty Minister Pusile to Vingan Atlangzar Lok Sabha Opposition Member to Speaker Ombir Larin Tolo na motion and Helut Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Ramnath Thakur and Prime Minister Kisan Scheme Man Ani Nuwa Cheng Vai Bel Chanu Ali Chuang installment room somni pakhat manga sem to ani ati Governor General Retired Vijay Kumar Singh and Wayne Khan Lamola Lesde Kut San Samni Paruka Lesde Department Noya Welfare Board and Jeglute Hamchana Turadon Project Pani Ra Bicher Tule Ezuna Kailo na Tangzar Governor John Hekuti Exhibition Pangay ang Maya Nilova Hekuti Economic Lamah Masona na Satak Mizoram Tan Asiem Theidonani ati From the bottom of my heart, congratulate the Lesde Department, all stakeholders for organizing this commendable event. I'm confident that this program will have a lasting impact on generating employment opportunities, strengthening enterprises, and inspiring the new generation of entrepreneurs. I wish this event a great success and hope that it marks a significant step towards more prosperous, more skilled and a self-reliant Mizoram. Rabbit Hertu hi Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board no enziaglo tele anchen puite tana roman ni in anzirnale anna zonna an Rabbit Hertu tana donani he project tanin cheng vai bel sinhila no somret pariat roman ani kan correspondent report ngai thang Rabbit Hertu project no here welfare board no enziaglo tele an fat to graduate level nanget an nei theinan an exam san dana zirin cheng singa ta cheng noi khatleng puina pek thei an ya post company passing tana entrance exam emo coaching shang te cheng singa thleng sponsor ani don baga foreigner na tok tu te chu an training na cheng noi khatleng pui thei ani bok junior in chana Akashvani News aizol Ezuna Kailon Project Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board Project Harni in board member tele anchen puite tana thiamthil zirnale bultana turadonani Abultan Atan Aizol West 1 Aizol West Chule Aizol West 3 Assembly Constituency sa te baka jele correction center o megmi zariatin zone ni in chu Mizoram pum huwa pa kalpui turani he pilot project kalpuna turatan zirchina shang ni in sakna construction kai noi na pangale adang non construction trade somni pathum thansoni ezuna kailon project atan hian cheng vai bel che somni pasrile point pakhat pariat rohmanani kumsani somni proksung khan pilot motin kalpueni anga kumsani somni proksungin pilot motin kalpueni anga pilot project zo nuwa Mizoram pum huwa pin kalpueni anga heta hian beneficiary sangni zeli omtura rohman ani bok Voina la aizola mola lesde kutsan somni prokhonna in khoma lesde minister pulan hinglo marchuan lesde department hiltum berchu Mizoram thalaite ta na bana kai ani thu soya thalaite chu an theina tanga thiamna nei tur kai shruaite thiamna tanga rem chana siam sakle rem chan atanga ezona nget le mantlak nei tura kai shruaite chu an thiltum ani thu soi pulan hinglo marchuan lesde department chu bana kai scheme ne in rem taka kal kop thayani ti a bana kai chu thalaite len thoktu te an kalzel kong tin renga an kota von le zuizel tina ani ti a lesde ko chu intilhmani mailovin thalaite tan na zonna konga hundam chang siam na ani thu soi ani When we say hand holding, we do not mean a one-time scheme or a one-day program or even a 5-day festival like today. It means working alongside our youth and workers at every stage of their journey. Our handholding begins with identification and understanding that not every youth is the same. Some are academic, some are skilled, and some are entrepreneurial. It continues with guidance and skilling in relevant market-linked skills and towards employment and entrepreneurship. I would like to repeat the word market-link. Nathatu Nelo Thalate Tarnes di Kutia Chankai Don Ti Soin Les the Minister John Thiam Nazir Namunte Sum Don Nalama in Puinate
na zona mun le na thok tu te ham than na intrit fi na tanaro manani thua soi ani Mizoram Sarkar and Mizoram State Healthcare Scheme changtlung zo kalpui turin Asian Development Bank ADB atanga loan assistance mu tumare takmalo lak to chu ti puitlin ni in loan agreement sign felani ADB loan lak na tur hi kumin January ni samni Pathum Khan ADB headquarters Manila sign ani a in the IO in Baldeo Purot Sartha Joint Secretary Department of Economic Affairs Ministry of Finance to sign up ADB IO in Mio Oka Country Director India Resident Mission chuan sign in Mizoram Sarkar in Puram chuana Finance Secretary chuan amhunakal lovin emote in sign ve bokani hemi ta na Mizoram Sarkar loan project asiam improvement of Mizoram State Healthcare Scheme by enhancing the corpus fund ti hi kumsani somni pani mai ni samthum pakhat khan Union Ministry of Finance chuan lo pom to na a harasana sang wangin approve thailovin oma tun sarkar hian tharthol in supporting public healthcare system strengthening to achieve universal healthcare for Mizoram tiathak ani Mizoram universal healthcare ta na ADB tangalon mu zat hi $, maktado zale pariat ni in India paisa chon cheng vai ba chazariat velani a ADB loan pumpui hi Ministry of Finance noya external aided project noya mu ani awangin sarkar lai puer turani Central Sarkar hian loan pumpui atanga za som ko chu grant angin Mizoram pe anga za som cheng vai bel sambriat chu Mizoram Sarkar hian loan anga Mizoram in arul vet turin apuk tir chhongdona Mizoram Sarkar in he za som arul vet tur chin arul na tur interest rate hi chu Central Sarkar Ministry of Finance in alro man turani hetila hian Mizoram Sarkar chun Nimin Khan Max Kalpui to damdo intena damlo enkona senso nan cheng vai bel chakule no som ko pakwa pe a Sarkar kumkal meka Max Kaltangin Max zom tu damdo intena dola damlo singre sang thum zarok somret enkona senso rulnan cheng vaibel se za somni program no som thum pakwa apeto ani Mizoram State Healthcare Society na taran danin sarkar kumkal meka nikum April khatanga nimin January ni ko nikum April khatanga January ni ko thingin Mizoram Sarkar chuan Max zom tu damdo in chang thana damlo enkona senso rulnan tum somnga paret paisa peto a paisa pek cho to zong hi cheng vai bat za samni program no sam thum pakwa ni in damlo singret sang thum zarok sombriat te en kolsen so ani Mizoram maran vultu te tan HNVT minister pusila sevong chon animal insurance atlang zara hemi tan hian National Insurance Company Limited the HNVT Department Secretary Pul Sangling ten minister MP MSPCC Vice Chairman Dr. K. Silalma somzawa ma thawna thungan ziakani he animal insurance hian vok bong sial kel beramle ranvul dangte huap dona premium za som pangai ranvul tu te den tum ve turani a hen holding noer progress partner te ero chu hen holding atanga tum sakvek ani don thunga vokvul insurance tan cheng sangni choi tur kha cheng zani samko pani chau vokvul tu ten an tumangai don ani minister pusila chewanga chon ranvul tu te mamo run insurance kalpui tak tak turak malak naum ta cholo mamati thusoya Insurance company tamzok in animal insurance anti puilo thule ASF wanga Mizorama insurance company kolu anhar thu soin chief minister puldo man sarkar lai puya Thenin insurance company sang head office a lekha athona wanga tudin mun thengta hi ani thu soi bokani minister chon sarkar in animal insurance a theto pachu thu soin animal insurance a state matching share za som thumpo za somati hniam sakturin union minister a angen thule Mizoram ngan angin za somati hniam sakani thu soya tuna insurance langzar tak atan hian central atangin cheng nuai somruk poruk singli sangkuwa mu ani thule hi first installment chawni im first installment a hin run sangli zanga somli panga insure tumani thuwa soi ani state puma win khan national deworming day February round hona polin ru lo pek run puini ani a aizora chon chatlang ankanuri center truwa an manga rul hut lo pek be pui thak hian rul hut awanga no pangti center samle riselo na sang awanga anjur laile an than chho na konga harsna thlen thei tur ti bo hi atum ani chanchin thar hi akaswani aizol tonga ponani a naktu jingdar serle chanwe chanchin thari ponani ang Lok Sabha a opposition member chuan speaker Om Birla rintol on motion thelut thunan danin opposition member thian Lok Sabha secretary general nena le khan theluta dan angin hela khai zir cheni nu amalak sunjomani ang emotion thelua hian opposition party zinga Congress DMK Samajwadi Party RZD le left party ten an thop thon ziaka hetilen opposition zinga TMC nan ziak belo thung ani
Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Ramnath Thakur chuan PM Kisan Scheme manani nuwa cheng Bible chanoi li chuang installment tum somni bakhat manga sem to ani ati Union Minister choi danin lo nei tu te on lam digital infrastructure manani awangin ram chu hun song song lo nei tu ten he scheme manga sum sem hi andong ati a puthakura chuan he scheme direct benefit transfer mangin Aadhaar thunjom bank account a thunani ati chanchin thar cherti top na na tang pui Governor General Retired Vijay Kumar Singh and Voin Khan Lamole Les de Kut Sang Somni Purko Hong Mizoram Maran Vultu Tan HNVT Minister Pusila Soivungan Animal Insurance of Tangzar Lok Sabha Opposition Member Suan Speaker Ombrilla Rintolo the motion Antelut Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Ramnath Thakur Chuan PM Kisan Scheme Manani Nuwa Cheng Bible Chanu Ali Chuang installment Tum Somni Bakat Manga Sem To Ani Ati Chuti Zong Chu Chanchin Thar Kan Pon Thei Chu Ani He Akashvani Lungleni Thogrim te Okisan Vani. Thogrim te Okisan Vani hun kan lo thengle ta kan program ngai thatu te chebai ule zalina hian pusi zacha ma khulai lunga mi so thi hwan nei tu kan palai na komna kan ngai thadona he Thogrim te Okisan Vani program he Ministry of Agriculture and Farmers Welfare sponsor ani ilongai thang ai thatu te chebai ule tu huna hian pusi zacha ma kholai lung khwa so thing mun nei kan ron kom do na ni pu cham chebai le chebai le engti ka tangin nge so thing hi I chin tran tin bul tran phat tyang ti ro so thing kan chin na hi rei to kho maya sang ni malama khan kan ching to ani amaro chu keini chung bi kin kan ti tak tak deu he chu sang ni le panga ti vela tang khan ti tak tak dewa kan han ti ve chu ni nang mani rama in ching ti na ke mani ram bi ka lir kan ching engtia zaw nge in ram in so thing chin na hun so sai kum dang kan ching thin da na chon quintal som quintal som han ti hen mun chin ang lo khop mai mo adikang chu chu a chi ti te de chon zaw de mai ne tin khat le chon ve mun lai tur he adaya lin khat devin ani boka lin zin dewa achi ti len deu chuan zi mang reng tak oi omlo khopa zi ma hena lin thei boka chu wang chuan a mun zong a soi hi chuan a lin za thin ang lo du khop mai atang puin ke ni chu kum som kha quintal som bor lir kan ling kum som chung khamo amaro chu sang ni som pasari som pariat som pakua ti borvel sang ni som ni pathum nena in kar borvel kha mumal kan linglo ata min mi chia na sal to kamo amaro chu kan fanu hian nikum te po a ti du to te suai ha mai mai ka te a chi chua tal la ron to le ta ka a chi le ngai zong a khem em te ti ram se la nikum a khan bek ruk chau he ling le amo chu khu a tak phia na a chi chi na ri do wi lin kan chi a chuan kan kap boka chu chuan atam naram chin thei lo naram tiami song song in an hriat nin ka hria ni kang ram ani amo ni kang le tuk mai chim chong ane ma sa tha khop mai si so tin chu ni kang a lo thala wan ti thin ti thala wan ti thina ke ni pon kan chin to naram ani amo kan lo cham to naram ani dewa ma se nikuma chu khang hu muna khan chula kang hunwaya a chinga a hri kha tha phiana chu a chi chua tur chu dikhan a lo nei ram se la chuan ni kum chuan uluk tawin ka thanga
a chi tur kha oh be ka ro chu ka nga tha in la a chang pon lo tian kan ul bun hian zoi lo kul lo ri mak khamo khang le tia han ul buna alai dum ham hetian a val deuh hi mo a val dewa a tha kan ti taka hi chu alai duma chu khang chi deuh ngap kha ka thanga nikum khan chu ri domi lin kan chia chu kan ching ta ni ani chu so thing lin dan te po hi kan lap mu mia law ani chu hetia kan interview da kan income na lo ngai tha tam zo po hian lap mu ngai lo la shingai lo an ni nga engtin nge so thing chu in lin dan khami abulin tran dan achi in than dan chu isoi ta de ro leya in han pu ma khami in han ti dan te po kha ol sam te si fia de kha min han soi sakta la angai nom viao in ka ring don tak mo so thing hi achi chu ke jung pui tia ve la mo ni mai mo atlang pui thuin chu ti hian UT kan man tlang pui ania UT kan te tu tho kun deuh chil hi chu chuan kan su che ka kan du dan hi in anglawa then khat chuan uluk takin an dua bi khuar tha deuh takin amit po nuai lama da kherani deuh se la ti chuan an da a ti chuan an ri vur ne a khat zong hi kan tu tho kar ang vel hi ni tlang puyang tong ti la di ko me tong kar ang vel hi kan lin dan tlang puyani chu mi pia lam chu kan du da na serin ain ang lo theta ma se chu ni kan lin dan tlang pui chu ni vek ani chu ania keima bi khi chuan hei kan han linga ipte a hian no ya deuh thian ne te big deuh wo an nuai nu khoi kha nu khoi a budel hau hian deuh thina tak te hi chung chu tian a bi hi ka che ka tha deuh lekin bi khatan lin tham khan ni em hian ka he thin si lo a sir ve hian amit in hoilo zong hian ka da ram thina chu tiang ta chuan kaling mai thina so thing hi a then chuan a bi hin du tha khop mai a bi du tha hi chu na uluk taima an ne a that poi tha nge in ka ria nisa la ka pon hi ma nisa ro kan ti mai ang po hi om ta lawa mo ma ro chu taimak chu ngai deu adikang di khata po itam tak khan lin do pe kha chuan tam tak kalin thei lo ko nga kham du o me ka ti ne kham tu lu tu iptein kan lo ak bok se mo khatiang khane ko kham du lu tu kap me ni ani le ni khata hianin patling hianin bi engza ven hi in lin theyang ka khelo abi song chuan ke si som nga ling chu chak takan ni leichara chuan mo ke si som nga ling hi chu chak tak an ni in karing quintal khat pat ni in lin ngai do na mo maro chu thil he dang lam ta a tun ma ta chuan quintal khat ling te po khan om ani kholai nu ngai po hian mo ma se kan na kha lo la buan deuh mai an yang karing kan na manau panga kan na tho reng hi kan buan deuh mo uluk na chang hi kan hre hara kan han thok rei dewa a tha jok ti hi kan han ria kan han uluk thar ve le ta tuna pheichon tamling thei hi kan om to mang lo kan uluk ta deuh bok nen mo a that po lo tha deuh nge a ke ji som nga ling thei hi chu pachak ta kan niang ni don chu ka sha thiam mai ke ni ang chu so thing ling ka tan so ni kan lak don lo via mai tro kan khom kan da ra kham ma don ne me se lo sa amo le lo cha ra nap ne hian an koi nu chan tui ne nap tui ne mit tui ne mấy vấp nên những bar hiện hung mày mo alien ringot po lo na mai lo le mai tui si khi hao tak em mày này đi căng thì lai là thọ lai chuan anh ấy chu
anh đi lệ ý số thiên chú thì chuan in hành linh ta tí rồi hey in tiếng Anh phu te chú in hành linh in hành chi nga in hành linh nga ý anh nói lo cả rồi tôi rồi lạc khát chân anh rồi cho ra cho mấy ta số thiên khá ngay về thâu em khát tiếng rồi tôi nát lạc nan vắt tiếng nghe rồi để ủ bộ ảo thế chú số thiên hi à chỉ xem mà đâu chú thui đâu lắc lầu cho te ông này cái linh gì mà thui đâu lắc lầu cho ra lầu mi thui man te ông hèn hi chú à bị tất cả số thiên linh tu te bộ hiện mi đắng đắng bộ lâu chín ta sẽ là kan soi po hi adik nan mu karinga hết tiếng anh lâu cho thuộc được na hết chú ip te a po hian a uluk turani khamia bal to chuan a thar chor le tur chuan chor har takani to ni chu tian e wang chuan ip te kan akhliam lo ni pon alin na hian che thuk deuh ram chu tha ti lo chuan ni sa tur lo deuh nge chu số thiên hi kan da chor fer fur loma chi kan siam ma hian chu wang chuan heng ang chia te po hian kan uluk pe zel chu ei zon nan kan mang ro ni chu na tul khop mai mo khop mai chu masap achung lama te po da se dule masalama te po na ni ta se ti ro chu yang tal te po chuan hanlin to chuan ron chor hun ka ha lel om dom yang ka sha le om to thina số thiên lin nan hi chuan do thu sam taka chon lei phur deuh hini sela chu mai lei phur deuh lei tol mo lu lei tol lei lama tak in siam ania fang hian son tlunga te hian a hri chu thadu phia na ma se so thing tak khan han nek tur hian son tlung hi chu ngep rak me mo a tak thei lo der chu ni hau lo mà sẽ ở sân trùng bò cả tắc phê cho số thiên tắc đều phật ăn ôm hi cả ring lồng cái sự thiam cái mít khá thiam số thiên tắc đều mà hi sân trùng bò có phật ta hiện ôm bò hi cả ring lồng đấy chú ai chọn lấy phur lấy tol đều hi số thiên chọn tắc nan chọn là đủ đều sẽ vậy anh lệ tắc cắn soi cái ta sa số thiên số anh tí khun về lang aron tắc chọc chin October borvel hi atak in siam top lam hi ni dewa mong parter chwa to hemi piala ma hi chon zik thara chwa to lo khop mai amma lam hi ni de zen atak in siam hi antenan zun chomala ma hi chon kan ling zo de nge ya chuan June, July, August, September helai cho hi in siam pui lai tak chuan hi October top lam hi chu par teron chwa to zik thara chwa lu tuk to lo chuan eng ti khuna chuan nge in cho chin kan cho dan tang pui chu January, February, March henia a to don kum deuh hi chuan hei to kum deuh chu kum bi thia hian kum li dan hi kan ti ve deuh lekani adik po hi dik dan chin thui ta kom ve a henga hi chuan a cho po kan so du tlai deuh lek tlang puin April top lam hi a to for to ani deuh tlang puya mo chu nga khal tur chuan kanin hi sa pahan cho ma viu hian ong ro du boxia mo alo zang ma boxia ta kan so ma boxia a so chi thi tur so lo om lo ma lu tu ka ti a chi tur lo chu ma te wa han cho hi le la ma chuan a wi om khop mai ama ro chu a kum le na tho hi a no boi khop mai loi si amo ani the a kum le kang var le eng mo kum le na tho tur hi no boi ve le khop mai thua helai hi chu in dai deuh chu ngai thok mo chu paruang nan yen tiang deuh hi ni adi kang tru si hian kan oma tho mai thei si lo hian mo tiang chu kan om thina na so thing hi chu tlang puya chuan
kalphung tharin hei hetia an ti he chuan lak sen lo hi kan nei tak tak meng a ti hi arin rum rum kan en kola kan eison na ni ti kan ria atam tur ven te kan zir chho zela kan uluk chho zela atam na rama po kan in veng him view zel tamai ni chu alom om khop mai ma po kan son puin karin cái này bộ bê đồng tổ kha cái này bê sĩ thắt lên để tiền mò ông hàn lom ông em ông thì rồi bê đồng rալ chắc ai chọn bê sĩ là hàn lệ thar lệ sim bộ kha bê sĩ na khá cho nó sọ thiên tam bốc khá nó tam bốc kha nè mò tuần cal phung thara hết chuan bê sĩ nó thar lên cái hàn tia bê sĩ ông em ông siêu mò cái bộ cũng mình chú cái là khát miệng rồi là sợ là ba chú nghe chân akalat se man lo ni pe chul dang masalam hi chu mi tang ki anam in va masalam taka hi chu a tul berlem lo a te kan tia ti khon rama khon kan ta khol ri mai a cho chu kan so to ani chu ani le a cho da na te po kha film khur hi angai viu lo wang lo ka ti ngai khop mai cái gì cái chân thế hành châu về thì ngót thì là từ cắn châu hẹp biểu điêu cắn chỉ siêu ông nuôi yang à cái tia cái hành in bộ yan mà ni bộ cắn nào te nó là thọc lâu school chọn lại cắn tia anh tha cắn ít về sẽ cắn phơi liam à che khe lok phâu mấy anh đó khang cái chú của ấy đã sẵn để ông mắc khang ngay được rồi nói ấy rồi là tầm phía mà anh lâu bọn anh để vào sẵn tất khang ngay nữa chứ gì tôi đã tan phê chuan uluk lẽ khang ngay mà nè bọn tụi họ cái xe thara ngắt tiếng thì chỉ tụi chỗ nan chuan chỉ phiền dục chích sop suk thì na cái tia tụi họ khán sang được lấy cái xe tia đúng không cái tia cái ngã uluk về đấy thế bọn khang ngay anh hiểu chú na bây giờ này cho tiếng song ở đây sen cho na tụi họ lấy ngã an chair đằng làm tiếp bộ cho ngày đó na chat tất cái này in ngày đó na in sen giao t-shirt lấy mày ngày về không mày mi sau hết chú lẽ hay căn hạt sau căn phình sau về rất rất vai ang căn này là na kuma căn thọc lại đón thì in khé vậy là gì tụm này căn này là mà thiệp bel tụm này căn này thìn lâu hi bôi lại này căn năm mol gì lâu lần chuan à nè na tu na cho cùng sòng mà bóc căn là thọc đón thì in xia cái này chú ang chi phê chú mò sarkar trangin polu kan nei ve lawa leilunga mi lo chu adi khop mai chu zir ve kha ngai kan ei jon na chu ani ngot mai tero chu iron sei ta ka cha na poi mo khop mai cha ani le mo i pucham kan zo le chak che chu chan na sha chak deu kan nei chu hi sarkar ina ahan aron lak ma pu in vai te pu in he anon trip thin ta te ro anon lei thin ta ni kha nga te pu khat i lo shal ve thau em nge la shal ngai ve thau a lok thau lo mi kha ti anga shal te kha song mi ti ve mai hi chon a lok mo ông xiao ông don lo mi chu chung ko in chom non chon mo lo tam bok nen khan tin somain kan thal don ti kan hriat na hian ama en kol na pa kan in seng ngam ta ni ta ring chu se ti ni lova a ret se chiang lo kha chuan a en kol na kan in seng thangam lo ka dik chang kan ti tam le nge fi lo lâu to phiêu phiêu á thì căn in phiệt chuan anh còn nè căn in xem hui tất lòng chặt đấy mấy chú riêng bộ chú rồi nắng bán đi thì thật thâu tu cháu in ấy rồi nó cũng bộ thì phổ tu cháu cả tiếng phát lát mấy rồi căn ram xoay tu thế là mình ăn lâu sạch phê cho nên ai ngày đó nó chặt đằng dọc pon run sạch phá mấy thế này rồi lâu ngay sáng ngày sẽ chặt phiêu cho nên top làm căn này đồ nè thì rồi huân chua mình bèn căn lom khóc mấy anh ấy lệ số thiên chú hàn suy số thiên kan in sorbing ta sa tia be sei na thar te in han nia thei to pin han chwa ta sarkar po in ti han che ai soi ang khan cheng somnga hisab an le jan ta dro chu tia ngani chuanin e zon nai atling thei tak do ni sha im atling thei te reng le quintal khan man tam mai mo
tin an na mo la so to mo be ka khunga khal siêu phái bộ ngay lâu rồi siêu phái em bộ ngay lâu siêu vàng chuan an na hi mi mo ber poina tho the ne ma tik pa sang lai re lo mo kan chung kwa hian athiam lo tur khan lo rek reng mai ni tay mak siêu vàng chuan chu a lo na ani tin hey so thing em kan ti mai kholai lung chuan chung te po chu phur da hen kan ta thar le mo ita china ni mo ka ta kan man tu he chu ka ta se la ti khan eng ti mi a bi adang lam deu bi ke na mi so thing em chu so thing em hoi sen te kan ti mai kholai lung chuan mo ni khata kan zo se la doron pa khathi kha kan nu ka atha ani chu ram palai le nga phe chan tro doron thapa ngai kan ta to mang lo pai kong kan ta to mang lo khami de vek khani to ni chu iti chwa de wem ni chuang lo kholai lu hen tu ti chuang ye man da he re man khe kho mai o tha tak ani em hoi sen kan ti mai all some ten kan ta mai ni kha kan phur ra khoten khat chuan kholai lu doron he ban che ta ti mai ya ma se doron thapa ngai kha kan nu phal re la kholai kan mo a mel ani na tlom na ti deu kha ni don ni mo tro a tho chua ka ta wo sangla hi chuan kha doron kha na thok chu ro pui lo tat mai ani chu na kina i kholai lung doron huai sen chu kan mu ve nge ko ni se la pu chak ko ma lom tro a om tek fe kan in ti na hian mo kan mu ve nge don chu i so i thiam bo ka chu tyang kho pa i so thing jing tu te ta na em trang kai chu kan mu nge tu ra po in ngai la hun cha min pe kan lom le me soi tur te in zo tur te po hi la kat luk me ma se kan hun nei te hi re si la wa he tyang huna hi chan atla pui tak tak ba ki kan in zot man la wa tu hun ta chang khat tyang kha mi chin khani phot se la ti ro hun cha kan la nei te ni cha pathya ni re ma ti cha hun ta nga te po kan la in mu le la wang ti tu nge sai thei ti ro ni kan sai ta kan kholai te po min la ron fan sa kan chang om khop mai kan la ron mu ngei po be se bokila te ro komin in tan kum mal som la na lo ni se in se sel na te po pathian in mal lo som ro se kan lom lut tu ke ke po ka lom lut tu ke kan ngai thak ta khapusi za cha ma khulai lunga mi so thing hwan nei tu kan palai na kumna ni he thogram de okisan bani program he Ministry of Agriculture and Farmers Welfare sponsor ani zai lo ngai thang
ram kan ram nei chun lamu chui thang va ro ten sa in choi ze lang o so ram o mi so ram kan pi le punun moi swayan ka phal don lo sa in choi ze na nge so nun moi lim sai bo nang o ri moi ting trăng he sa in choi ze nang o so ram lim sai bo nang o ri moi ting trăng he sa in choi ze nang o so ram du lai dam ne si urala lem hi kan wa me tim lai lung ru adam thi ne ikya na chuan on wi mo Mamai narin kalana che lim ten kan lem dun vera tu dang len dang kanai lo du lai nam van hia kalung dum tu inisi Mamai di ming Ipiu lo chuan lo ma kim thei lo ka ngai em che mel tran tum le ni tu he chuan thui se lai lai le Sam tian chur tha an moi zua le nam donin ko pe le len rual zong te kalung pui chin nam van hia itan kal ham mangai na lam moi ka one zong zong ten ne dang len dang kanai lo du lai nam van hia kalung dum tu inisi mangai di ming mo ipiu lo chuan lo ma kim thei lo ka ngai em che mel tha kun le ni tu he chuan thui se chuan na vang khua tang ri ma se lung phan su o sak mel mo lim pen ton ni a hel le nge yang nang nen kan ri tun ve na sai vor kan nuam sing fan len zinga isat ning joy ze lim mo tu dang len dang kanai lo
chu ti zong chu zan in thokrem te o kisan vani program wat sai kan ngai thang thi cholong le ta akash vani lungle tanga puan chhuani hi Akashvani lungle ni tar sarile minute som ania lunglen lengzem hla kan ngai thla hona lo ni le ta azar ina hian Elizabeth Zodin pui Joseph Zaiming thanga le lerinting zong te zai kan ngai thladona ama sabiratan Elizabeth Zodin puin kan ngai berje ti hlarun sa
Olezan in lunglien huna kan ngai thak masak ber kha ka ngai ber che ti hla ni a aron satu kha Elizabeth Zodin puyani mangai na mit tui ti hla Joseph Zaiming thagan aron sang. Kim can đôn
mangai na mit tui ti hlaron satu kha Joseph Zai Ming thanga ni kan nun hlui ti hla lerin tingi zong te ron sang ma tin ka handonin lunglam ko vai roye nang ne kan ne lai ni te au kir the chan se o sui lung rula bia thu kan hlang lai ni te dân khoa lâu tại in lệ là gió chi nè thiên mít tuy nè cả roi roi tê đông về hiền cả ring xì lâu tê căn thu lần lại khá lung mồ riêng là nuôi suy lung her mày tu ran cái ring lâu chế asin area tuaran anae dân khoa lâu lại thiên mít tuy nè cả roi roi tê đông về hiền cả ring xì lâu tê căn thu lần lại khá lung mồ riêng là nuôi suy lung her mày tu ran cái ring lâu chế asin area tuaran anae dân khoa lâu lại thiên mít tuy nè cả roi roi tê đông về hiền cái ring xì lâu tê căn kan nun hlui ti hlaron satu kha lerin tlingi zong te ni lunglen hun kan man me kani adot le tan engtin ngai mo ti hla Elizabeth Zodin puin aron sang
tin ngai mo ti laron satu kha Elizabeth Zodin puini olezan in lunglen hun kharnan thei chang se ti hla Joseph Zaiming thanga naron saang vang khua lên dung tê thirin ka hoi vela nang ang pian dây lệ mel tha tông hia ka môi si lo ôi an khua du lên po hia lo tuan che trả lại min khen tu mây thầy chẳng sẽ lưu hoa tê giờ lên gió xì ra nô ly dù lệ gió muốn min hello sẽ lên ruộng giống tên min sẽ lâu sẽ ô căn ru đến chú ngọn nghề ya suy lung ruộng tu đi mong lên đừng hi du ai sao ni mà sẽ qua rồi lo đi em lâu đi về mà anh lâu phang ta ôi anh qua được lên tôi ya lâu tuan che trả lại min khen tu mây thầy chẳng sẽ lưu hoa tê giờ lên gió xì ra nô ly dù lệ gió muốn min hello sẽ lên ruộng giống tên min sẽ lâu sẽ ô căn ru đến chú ngọn nghề ya suy lung ruộng tu đi du ai sao mà tìm về nào lung rung min lâu hoặc là chỉ tin cần ru đến chú ngã xiang y lâu lối nghe ôi anh qua được lên bôi ya lâu tuan che trả lại min khen tu mây thầy chẳng sẽ lưu hoa tê giờ lên gió xì ra nô ly dù lệ gió muốn min hello sẽ lên ruộng giống tên min sẽ lâu sẽ ô căn ru đến chú
thei chang se ti laron satu kha Joseph Zai Ming thangani ole chuti zong chu zarina lunglen hun kan man thei chu ani a Akashbani lunglei atanga puan so ani tuna hian zandar sari de minute som thum panga ani a mei che hun Gracie dal siam thangi le efdal yan nguri lunglon lunglei ami ten meichia ten khotlang rongbol na ti ve tur kan neem ti thu an soi longai thlangu khotlang rongbol na ti ve tur kan neem ti thu kan ron soi do na mun taka lo ngai thaturin kan so ma che u chani nang han soi masala han soi chan la pe chu meichia te han ti ve tur hi kan nei in ka sha kan nga boka ama sabera chuan chung kwa hianin bultan hi kan nga ya chung ko enkol tu chunu kan nya to na ya chuanin kan thalai te an that che to ani kong sang sang ya nan that cha na kan thalai te he chatni a te po kalan tum to lawa tir tol hen ngai to ni hei wang hianin nu te hi kan poimo ka tia mo meichia te kan poimo ka tia kan nu tam tak hi chuanin an fa te hi tirna chang an shelo tiran he hianin ani chu tlai wara ngei lo atlai war thei lo a hrisel ta na thalo ten ron an ti ta ni hei wang hianin ka ngai da na chong ke chu kan fa te that chia na chan tam tak hi nu te mo phura hian ka ngai meichia te mo phura hian ka ngai MEGEP te mo phura hian ka ngai ani chu kan fa te hi mithi ina tlai war tur te hian tirila than lai tur te hian tirila tha ka ta nang chu engei ngai ve dan thai ti ve thawem meichia te kan mo phur na ani nu te hianin khen kan fa te hi tur sang khotlang an mo phur na te kan shil te hi khotlang rongbol na kan lo ti ve thei kha ni tlat mei ni tro adik cha lom enge tu ma tlai war nge nom lo ke pon tlai war te chu ka ngei lo ka ti thei lo tlai war te kan fa te pon an ti thei lo ma se kan mezo culture ania kan ti tur ania mi thina tlai war te than lai te idam lo ina kal te o thingpui lum te khang te mo nu te hianin kan in chung tang han bul hi kan tran hi ngai ka tia chung bul kan tran lo chuan tro ti ngei nom lo chuan chu ba ka po tro kan fa te kan tiranga tin ke ma ni ngei po hi kan pen chwa ngai ka tia hei ai ka lom mi thit lai bar pui an lo ngai ta a tro chuanin zinga te thalai hawan lo tlai war ta a zing lama ei rongbol ma si a kan vakal fat te hi kan ti turania insang marazin thote kan shia tro nu te po hian insang mara kan ei rongbol te boy si la vin khlai kar ola khan zinga kan vakala kan thlai te thok tur kha kan ti nge turania tunna hi kan in thla da ko pyang ka shia ni ka mu ve dam ko yang ke ma nge pu kan ni thowa bultan thar hi kan ngai hang ka shia hi mi ko nga te hian le ko har in kal te mi thina kal shim te zai te kan in thla da me manu hi kan zai pe lo ni hi tro zai pe lo a zai chun po hi kan phun sep mo kan thu mur kan zai pe lo trong le mur kan nui atro tang te kan in siam tha ti ngai mei cha ten kan rong bol na khotlang kan ani thi she thari langin ko har in kalte e than na ni a te ko le ko har in kal chu e soita e lo mithi in kal khai soita tro mithi in kai kan kal tlai lu tu ka som pani vui ni to som pakhata te kan thena a then pe chu vui don trep som pani do na te kan thenga e kalma te hi kan ti tura ni ti hi ngai to ve ama ro chu na tul pik te tang nei te chu kan ma ro chu tlang te ka chu kan in tha da ni ko kham te ka chu mo in sha thia ma kan in sha thia ma ka te ang na te ka chu office kal lai te na tul bik nei te ka te ang te ka chu ti ngai na om lo ni me ama e ro chu a om chun ang pai kan kal tlai lu tu ka ni dar som le chan ve po hanin atlang pu yang kan theng lo tlang pui ni etro me cha ti kan om lo kan in san mar he ngai hi ka ti lo tu ka mo ka ti tu kan nei ve hi kan ti tok lo ni ka ti de o chu ni chi na i soi kha han soi le ta dei tai la nge zing kar boi khat le khan tho ma te hi chu mo a har sa lo kan tum tlat chuan kan han kala ti han ti ku war tria na te kan kal ta
enge zing lu tu kho war ma lu tu ka kal po kha ngai chuang lo war chia na ka li la kan thalai thak to kan thalai ten han ho do ka chung ko atanga tlai war tem enge ruang kil ho an han hong bia ruang po in kil tu nei mang lo hi kan om the nia enge me har sa chung kwa ka chung tun ngai lo la ma la ngau ngai lo se la har sa ve tak chung kwa phe hi chuan mo ruang kil tu nei mang lo ba tia ni ta me te po hi om the nia o chu bang chuan nu the kan in san marangai pe chia te hi kan in san marangai te po ni se to abi takin chia na hian mo kan in san mar he ngai lu tu kong eng ki mahan kan in san marangai ka tia nge than nga ni alo thlenga than nga ni a te hian mo kal hi kan om lo ko kan ani na taka chang kan khotlang nge machine tam taka po hian in khat po kan po hian kon ngai to lo tu ma ang khan tro ge mani hun ang ve ti te nya le la khang a te po tu lai le zwa la hian in kan that che me ma kan in tha da kan chu le khat de ke cha da lu tu chen om nai chu chau kal na tur de man ngai de mu ni ti tur han tro che chu kan in san ma ra ngai chu lam Christian te hian in nge kan ti tur ti te poi kan ngai to so ko hi ngai yang ka sha mo Christian na na o ti ro kha ka a om kat si ha ka kan ti ro chuan tu nam dang in min ron ti sak don lo ti ro ge ma ni zo nge te hian ki heng mei chia te rong bol na sang khotlang kan rong bol na sang ani tlat ani ti kan sha thia mi a poi mo khopin ka sha to in lawa pon ka tia ni chi na in soi pakhat le kha kan dek le lo ka nga ka enge chung kan fa te than lai le mi thi in kal chung chang po kha kan soi le de nga khami a po kha nin hei Christian kan nya chung in khom kan nei thin ta ni to la ya chu kan nei deuh tlang pui ta ni a tlang pui nei lo hi chu kan tam min ka ring lawa he ta te po hianin nu le pa te hianin soi tamila he hi Christian kan ni chuan mi thina kalte thing pui lum te tlai war te than lei te hi kan ti tur ani ti hi kan in zir ti rangai YMA kan ni na po hi hi kan Christian nei na ken telani ti thleng hian kan soi tam hi ngai ka tia hi nu te mo phur na a hian ka ngai mo kan fa te bula kan soi tam na chuanin nu te thu hi chu mo nu te thu zom du lo hi chu an tam to lo an tam lo no panga hian mo ni di khop me in ya chiat lampang kan soi that lama po hian tro in nei ni a te tlom nga chua mo fatua te pon lo so ma mi te nal takin an kala ka pe lo mi nal nia lo fatu big chu ten dia te ro tom ngai turani ti kha i kan shil chiana kan soi don kan mizo culture ani a khang in pui ton te kha kan ti turani ti kha i ke ni nu te mo khotla kan rong bol na ti ani na ang hian kha kan rong bol na ni tlat kan fa te kan zir tir te tin ke ni pon tai ma kan chua neyan om pon in khom pui te a chia shim ma chung chang a hian in kan fa te kan zir tir thati tin tlom mai na te po yang ko ti sin ai upa za na ko ma te to lai me te hi ai upa te hi an za vak to lo ke ni hun lai ti ve nya le la kha anga te ka te khin chuan ton lai mi chu an fila an bright e me maro chu he tiang ponga hian nu ten kan fa te kan shil mun hi angai he in ka sha kong tin re nga hian mo nu te kan insan mar hi ngai ka te kan fa te kan enkol na kong shim ko shan le khotla kan ti tur am shil khatro kan han shim hi nu te mo phur na he nya mei cha te hian mo phur na hi kan nga lo to ka khotla kan fa te kan shil roi khan ti ro ke ma ni nge po nan kan che chwa ngai turin ke me nge nge a kai shwai turin ke ma ni nge hiam bul kan chan ngai bo kan nu te kan in thla da shim tun la phone no ma tro kan khoi kan thua thil dang ti man lo le te nu te po kan nom tat ma ni khatiang khawari fa te po ngai chak le lawa I phone ringot a chil te hi ol ria wa heng te po hi
nu te pon kan ti lo angai kha kha khotlang a me chia te kan rong bol na a khan atil vek to ti ge chu ve in mo mo katia he MHEP te po kan MHEP te kan nei ka nge amingin committee member te kan ne ta ni chu he nga te po hian katia nge chom dol ngai te ta na chom dol na khon te kan lo ti ta ni ta center te ro te kan tran pui na tur kan kon na ka kan ti ta he ang zong a te po hian me cha te hian in kan ti chon nu in me cha in thil kan ti chuan in akal duak mai ni nu hi mo thil pe ko nga po mi pa hian an pe vak lo tang kotlang thil pe chung chang a kotlang thil an ron khon ta a ta chiat ni that ni in chom dol na tur kon ang chia te po chung ko nu hi kan lo pui mo ja hi mo rong bol na sang a hian te fa te zir til te khang zong zong khatro nu hian mo phun na kan nga me cha te hian chuan thil pakhat le chu khotlang fai na ko nga hian le he chung kwa hian chu po chu chung kwa bulchan nia chung kwa hi ngai ve kan fa te kan zir tir ngun hi angai khom me fai na kong te po hi dik chia lom kan bol lo pai da na han kan ril ru hi langa mo kha la apon ti khai shalom ne bol lo ti bol lo ti la kha kan bol lo pai da na han kan ril ru hi langa chung kwa hi alang thla ta mo en tir nan he ke ni side drain bula kan om ta no pang then kha chu thilan ron e ya kan lo phiat fa ya tan jing tin deu tho inside drain kan phiat ta in ko thi kha an e ya eng ma abal le fai po ngai to lo an the thangot mai ni khang kha enge kan ka fa pa hi no pang te ve tho ne ta a bol lo ten lo pai ro se chak la bol lo bo ma pai ro kan shil mun khan ama khan apai ngam lo mai ni to pai lo na ro no te han pui pun na ni khwa po kan sa da hmam te kan kum thwa ko na kan pen pera khang te kha bul kan chana ngai ke mani hian mo dikalom e mo fa te zir te pon kan fa te khang kan shinga bol lo te po ko ve na te kan akanga bol lo bo ma lo nai lon bun khang te po kha kan ti angai ja lo sha tin thil pakhat ka ngai mo vi ma na jing kal ko nga kan kal ta te ro kong pu ya khak te kong lai te lo in cha plor te ka tin ke chu ko wak tu te ka tyang te kha mo hi in zir te kong sira sham shami ra lo na tu ra chak te ka tyang kan chil kal kong lo lo chak nga ya lo va e na sen an lo pik pe te te ro te nam lo to ka hoi lai mo pan sham te kha tyang te ka thil ho te ang lang kha mo ko tlang mel moi na kha ni tat me ni sa da mam na i soita ka chan pen peri soita ka chan nia ko hore na te kan han kal ta he chan na ta kil khata emo khan phia hian asha tlut tu kan ni chu han phia che hian mo chu bang chuanin enge ina tang han de kha po chha tu the ak chuak sa ta ila saranga mo te kha ak chuak tai la ti khang ka ta han chu pai me tai la zu pai na kila he chinai ku va e na chinai por te an tha ru ngat le ya to lai hian kap mu chuan tak tak hi chuan an ti to ni chung sel to lu tu ma ro chu lat ti lo hi la om tla ta mo hen te hi mo inzir tir ngun hi kan nga ya aten omania o ative lo tan han ten om be wan ya lo chuan sa da ka hma mai lo ka ten thei tu te an kom chha ka an han pai to chu ba ka mo hey chiat na chiat na lampang kan soi ta sa soi zel tai la heta mithi ina te kan kalta tui bur kan han pham ta an nam lut tuk ta ni abulomi te khwa lo lum phei chanin atlang pui me cha han kan hwa mania hei ru ko in ngai to that fe chu kan ngai ka ti nu ho hi mo pai na le thiang him na ko nga hian tin i epon lang bak chu kan soi to bok in chu pur ti fai te me cha mi in kan valo to alo fel fai kan aso om ha me a chia emo a tha emo ta hian me cha ten mo pho na kam nei na se be ma i kha kan in chung khur le kan kot ka ya fai chuan khotla ma fai mo kha tyang zel khan me che in tin a han me cha kan om deu tu kha kan kot te i kan in chung khur te kha ti fel fai la khotlang kha fai me don kha lo ni ti hi ka ngai to in lawat in chung khura tang ya kan bul kan tran han ngai ja chu
mấy chia thì tôi là mấy chia thì tôi là mi bát thì tôi thấy xem chân răng lâu tôi ăn tết chẳng hạn thì tiệt với cái là mò hết in chung pura cần mi ra hay phone là mà cần đặt chuột ta mà nay anh in bị pa in chung mi thì khao ông tôi mà từ rồi tôi nay cho nên cần tít lan biết cần trần rồi chung có trăng rồi là tiền sale nó chung trang là thế han hay phải nó cần soi phục ta sale nó thêm han in một phải cái khơi biết cái lòng nha chú vàng cho nên sale nó đuổi phun cần phải ngay này thế rồi cần tít rate tổ bốc cần đuổi tổ mấy đôi đấy nhá nòm khóc mấy cái chú có ví dụ cái này mua hết đang cái soi nòm cái đó soi tour po đằng po cái là ngã lút tục nè hắn soi cho hắn soi tour đi tắm khóc mấy đôi anh đuổi tổ mình hei hi akashvani lungle ni thalai te hun kan ngai thak ta kha meichia tin rong khotlang rong bol na ti ve tur kan nei ti thu ani aron soi tu te kha gracie dal siam thangi le f la lian ngori lung lon lung le mi te ni ole tu na chon zai helongai thangu
찬담 낮잔 진tra shello tenenale kovel swal boeta zong zong te za tuan nun nei tura iswanen tlen turin inuna iswa melam tiro 찬담 낮잔 진tra shello tenenale kovel swal boeta zong zong te tuan nun nei tura iswanen tlen turin muna iswa melam tiro iswanun mga ina nei silo paderra zantin thashil hizong atok lo kong shilo ngako de shuai turi muna iswa bela tiro kovel mi ten iduzon iti chin an soite an ngai thai che chia an chin chia nuna phim khurla trong trai in vengla nuna iswa melam tiro ole chu ti zong chu zarina mei che hun kan man the chu ani a akashvani lunglei atanga puan chu ani daria ta chanchin thar hindi apuan delhi mi kan la chonga daria le minute som panga chanchin thar vek sap tunga puan delhi mi na chun zamang अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा में कई दिनों के गतिरोध के बाद आज केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष ने बजट को दिशाहीन और जन विरोधी बताया तो सत्ता पक्ष ने कहा कि बजट ऐतिहासिक है जो 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में निर्णायक मील का पत्थर साबित होगा। बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में बेरोजगारी को नजरअंदाज किया गया, रहन सहन पर खर्च और असमानता की अनदेखी की गई और आम आदमी की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट को देखकर प्रतीत होता है कि कार में एयर बैग को रीअरेंज कर दिया गया है ताकि उसमें बैठे यात्री सुरक्षित महसूस करें। श्री थरूर का कहना था कि बजट में बेरोजगारी को नजरअंदाज किया गया, रहन सहन पर खर्च और असमानता की अनदेखी की गई है। आम आदमी के संघर्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी की अपराजिता सारंगी ने कहा कि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य की तरह उभर रहा है। सारंगी ने कहा कि ये बजट सरकार की प्रतिबद्धता, संकल्प और निरंतरता को दर्शाता है और जन केंद्रित तथा समावेशी प्रकृति का है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है और ये बजट इस लक्ष्य की यात्रा की ओर बहुत मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल संख्याओं और आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि विकसित भारत की यात्रा में एक निर्णायक मील का पत्थर है। सारंगी का कहना था कि बजट ऐसे समय में आया है जब भारत विकास यात्रा पर तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया भी इसे मानती है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आज देश में विदेशी मुद्रा भंडार उच्च स्तर पर बना हुआ है। भाजपा सांसद ने कहा कि दिसंबर 2025 में मुद्रास्फीति 1.7% दर्ज की गई, जबकि 2011 से 2014 के बीच औसत मुद्रास्फीति 9.8% थी। भाजपा सदस्य ने कहा कि बेरोजगारी की दर हर दिन घट रही है और आज ये 4.8% है। उन्होंने कहा कि हमारा देश वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य की तरह उभर रहा है। सारंगी ने कहा कि ये सरकार के अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, संरचनात्मक सुधारों और स्पष्ट नीति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बजट से स्पष्ट है कि सरकार ने दीर्घकालिक विकास का मार्ग चुना है और अवसंरचना, संस्थानों तथा औद्योगिक क्षमता निर्माण में सतत निवेश को अपनाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए अमेरिका के साथ डील नहीं ढील हुई है तथा जब इसी तरह का व्यापार समझौता करना था तो फिर 11 महीने इंतजार क्यों करवाया गया। श्री यादव ने कहा कि कटाक्ष भी किया कि सत्ता पक्ष को अब स्वदेशी और आत्मनिर्भरता जैसे शब्द बोलना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बजट दिशाहीन है और इसे लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित बनेगा। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि इस सरकार में जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक हर चीज पर कर लगाया जा रहा है। बैनर्जी ने कहा कि बजट में पश्चिम बंगाल का नाम भी नहीं लिया गया। पिछले कुछ दिन से बजट पर चर्चा विपक्ष की इस मांग की वजह से शुरू नहीं हो पा रही थी कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कुछ मुद्दों पर बोलने दिया जाए। 2 बार के स्थगन के बाद जब बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेनट्टी ने कांग्रेस सदस्य शशि थरूर का नाम बजट पर चर्चा की शुरुआत के लिए पुकारा। इसके बाद श्री थरूर ने बजट पर अपना भाषण दिया। लोकसभा में 2 फरवरी से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा विषय उठाने की अनुमति नहीं मिलने, सदन की अवमानना के मामले में 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने तथा अन्य मुद्दों को लेकर सदन में कामकाज नहीं हो पा रहा था। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब नहीं दे सके। एक अभूतपूर्व कदम के तहत 5 फरवरी को प्रधानमंत्री के परंपरागत भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामेत ने कहा कि ये बजट राष्ट्रहित और जनहित में अमृत के रूप में कार्य करेगा। श्री कामेत का ये भी कहना था कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है। भाजपा की डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच बजट में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता संभवतः 2027 में प्रभाव में आएगा। ऐसे में देश में घरेलू क्षमता को मजबूत करना होगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में चंदन की खेती और इसके प्रसंस्करण के लिए घोषणा से सहायता मिलेगी। वाईएसआर कांग्रेस के YS अविनाश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून के तहत किए गए वायदों को पूरा करने की मांग दोहराई। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने कहा कि यह बजट आंकड़ों की बाजीगिरी है और इसमें समाधानों की बात नहीं है।
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार की घोषित अनेक योजनाओं में कार्यान्वयन की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि हर बजट में घोषणा होती है लेकिन कार्यान्वयन नहीं होता, इसलिए लोगों की और सांसदों की भी रुचि बजट में कम हो रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सांसद अनिल यशवंत देसाई ने कहा कि नई श्रम संहिताएं नियोक्ताओं को फायदा पहुंचाती हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। श्री देसाई ने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि माल एवं सेवा कर, उपकर पर बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 नई श्रम संहिताएं नियोक्ता को फायदा पहुंचाती हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस के राहुल कसवां ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के स्कूलों की स्थिति पर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि लड़कियां स्कूल में पानी इसलिए कम पीती है कि वहां शौचालय चालू हालत में नहीं है। उन्होंने बजट में 15,000 से अधिक स्कूलों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स लैब खोले जाने की घोषणा को लेकर सवाल किया कि इसके लिए प्रशिक्षक कहां से लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र महज प्रमाण पत्र वितरण केंद्र बनकर रह गए हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 2021 में शुरू की गई परियोजनाएं अब तक पूरी नहीं हुई हैं। डीएमके के टीआर बालू ने तमिलनाडु में नारियल उत्पादन जड़ संबंधी रोगों के कारण घटने का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इससे निजात दिलाने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रही, जिसमें विपक्ष ने एक ओर बेरोजगारी और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों की ओर ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा सहित सत्ता पक्ष के दलों ने बजट में की गई घोषणाओं को देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया। उच्च सदन में शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश में 2024 में निजी निवेश बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2021 की तुलना में 66% अधिक है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने विनिर्माण क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की थी और वह इस सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि वह विनिर्माण क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव लाई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया और इस पर 24,000 करोड़ रुपए व्यय किए। उन्होंने कहा कि इससे देश में 12.5 लाख रोजगार का सृजन हुआ। श्री देवरा ने कहा कि सरकार और उद्योग को मिलकर एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वे मिलकर काम करते हैं तो आपूर्ति श्रृंखला बदलाव, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और वैश्विक अस्थिरता की चुनौती के बजाय अवसर में बदला जा सकता है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने कहा कि ये बजट आने वाले 25 वर्षों में विकास यात्रा को मार्गदर्शन देने वाला तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम द्वारा कल बजट की आलोचना किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि आंकड़ों को किस तरह से गलत साक्ष्यों के साथ पेश किया जा सकता है, इसमें किसी को देश में महारत हासिल है तो वह है पी चिदम्बरम। भाजपा सांसद ने कहा कि 2014 में जीडीपी के आधार पर भारत विश्व में 10वें स्थान पर था और आज वह 4थे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले संसद के लगभग हर सत्र में महंगाई की चर्चा होती थी, किंतु आज महंगाई की कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये बताता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। उच्च सदन में आम बजट 2026-27 पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि विदेशी कर्ज सहित सरकार की कुल उधारी बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश पूरी तरह खोल दिया गया है, जिससे राष्ट्रीय बीमा कंपनियों का व्यापार खतरे में पड़ गया है। श्री राय ने कहा कि ये अच्छी बात है कि सरकार ने शिक्षा को उद्यम से जोड़ने के बारे में विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया है, किंतु ऐसे मामलों में समिति या आयोग का नतीजा सिफर ही निकलता है। तृणमूल सांसद ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में ढोल पीटा जा रहा है, जबकि उसके पूरे विवरण अभी सामने नहीं आए हैं।
उन्होंने कहा कि अमरीकी अधिकारी दावे कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल आयात बंद कर देगा तथा अमरीका और वेनेजुएला से तेल लेगा। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि यदि ऐसा होता है तो लागत में कितनी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के नीरज डांगी ने कहा कि ये बजट आंकड़ों की रोशनी से भरा हुआ है, किंतु ये आम आदमी की जिंदगी में किसी तरह रोशनी नहीं ला पाता है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पिछले 9 साल से जो बजट पेश किए जा रहे हैं उनमें ये सबसे नीरस बजट है। उन्होंने कहा कि बजट पेश होते ही शेयर बाजार 2300 अंक लुढ़क गया, जिससे पता चलता है कि ये बजट कैसा है। उन्होंने कहा कि ये बजट ना निवेशकों, ना बाजार और न ही आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का जो वायदा किया गया है वह यदि पूरा नहीं हो पाया तो रोजगार के नए अवसर पैदा करने के वायदे पर कौन भरोसा करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती ठप है तथा ठेके और अस्थायी तौर पर भर्तियां की जा रही हैं। चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके की कनिमोरी एनवीएम सोमू ने कहा कि ये वित्त मंत्री द्वारा लाया गया एक और विफल बजट है। डीएमके सदस्य ने कहा कि ये बजट गरीब विरोधी है और देश की आर्थिक सच्चाइयों से बेपरवाह है। उन्होंने कहा कि बजट चेहरा विहीन, आधार विहीन और लक्ष्य विहीन है। उन्होंने कहा कि बजट किसानों, कामगारों, वेतनभोगी, मध्यम वर्ग या बेरोजगारों को कोई राहत नहीं प्रदान कर रहा है, जबकि ये बड़े व्यापारिक समूहों के हितों को प्राथमिकता दे रहा है। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार खुद फिजूल खर्ची करती है और दोष दूसरों पर मढ़ती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बजट दूरगामी सकारात्मक प्रभाव डालेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। बजट पर चर्चा में तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव, बीधा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर फौजिया खान, भाजपा की सुमित्रा बाल्मीक, डॉक्टर के लक्ष्मण, ब्रजलाल, नरहरी अमीन, दर्शना सिंह, सिकंदर कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, निर्दलीय अजीत कुमार भुइया, वाईएसआरसीपी के मेधा रघुनाथा रेड्डी, बीजू जनता दल के शुभाशीष खुंटिया, सुल्तादेव, मानस रंजन मंगराज, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब और कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम ने भी हिस्सा लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर शून्यकाल में सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। कांग्रेस के मुकुल बालकृष्ण वासनिक ने सरकार से सामाजिक न्याय पर वार्षिक रिपोर्ट लाने और आर्थिक समीक्षा की तरह ही उसे भी संसद में पेश करने की मांग की। डीएमके सदस्य KRN राजेश कुमार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को कर छूट देने और अधिक समर्थन उपलब्ध कराने की मांग की। भाजपा की गीता उर्फ चंद्र प्रभा ने कोविड काल के दौरान कुछ स्टेशनों पर बंद किए गए ट्रेनों के ठहराव को पुनः शुरू करने की मांग की। भाजपा के ही डॉक्टर सिकंदर कुमार ने शून्यकाल में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों को जोड़ने वाले 39 किलोमीटर लंबे रंगत लठियानी मार्ग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को राजमार्ग का दर्जा देना बेहतर होगा ताकि यहां से आवागमन सुगम हो सके और व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। This is Akashwani. A review of today's Parliament proceedings read by Kiran Jha. First from the Lok Sabha, writer is Asim Kamal of PTI. The Lok Sabha today began a discussion on the union budget, with the opposition describing it as a directionless and the BJP asserting that the budget was pro-poor and was prepared with the objective of making the country developed by 2047. Initiating the debate in the House, Congress MP Shashi Tharoor likened the budget to rearranging airbags on a crashing car while assuring the passengers that the chassis is sturdy and they will feel better afterwards. Tharoor said the budget was headline management, where promises are loud, budgets are grand, but delivery is conspicuously absent.
Hitting out at the government for not meeting the promises it made in the agriculture sector, Tharoor said these announcements are like modern courtships, promises without commitments. Participating in the debate, BJP MP Aparajita Sarangi congratulated Prime Minister Narendra Modi and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman for the growth-oriented budget, which reflected the central government's commitment, convictions and the consistencies for the welfare of people and overall growth of the country. She said the budget is pragmatic, pro-people and balanced, and it was prepared with the objective of making the country developed by 2047. She said India's economy has become the fourth largest in the world, replacing Japan, and is poised to become the third largest, replacing Germany. Sarangi said the country intends to be Brexit by 2047, and for that it has to be future ready. She said the government is moving forward with conviction in that direction. She said unemployment in the country has declined and remained at just 4.8%, while inflation is at the lowest level in comparison to a decade ago. She said in the age of global uncertainty, India is growing well and the government's public expenditure has gone up to 12 lakh crore rupees. Congratulating Prime Minister Modi for concluding 9 trade deals in the recent past, Sarangi said it was a reflection that the government is capable of navigating a difficult world with conviction. She said the budget gave special attention to the micro, small and medium enterprises sector, and it has emerged as the top employment generating area where 33 crore people are engaged. The BJP MP hailed the allocation of the funds for raising 2 million trained personnel who would be ready to take jobs in the animation, cartoon and graphic making industries. Sarangi also applauded the allocation of substantial funds for the development of urban centres, including Tier 2 and Tier 3 cities. She said that India is emerging as a trusted destination for global investors, and that such an economic situation is being praised worldwide is no coincidence. She said this is a testament to the government's disciplined financial management, structural reforms and clear policy. Sarangi said the budget clearly shows that the government has chosen a path of long-term growth and has adopted sustained investment in infrastructure, institutions and industrial capacity building. She said the public capital expenditure, which was only 2 lakh crore rupees in the 2014, has increased to 11.2 lakh crore rupees in 2025-26. The BJP MP said the budget's focus on Semiconductor Mission 2.0, rare earth corridors and data centers will reduce India's dependence on other countries and make us future ready. Participating in the discussion, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav dubbed the interim trade agreement with the United States as one-sided and alleged that it will hurt the farming community as agricultural imports will hit farming in India. He said the agreement will damage the prospects of the industry and push back the Made in India and Atmanirbhar Bharat, self-reliant India initiatives of the government. Referring to the union budget, Yadav alleged that it was directionless and does not help in fulfilling the dream of a developed India by 2047. TMC MP Abhishek Banerjee said the finance minister spoke for 85 minutes, but Bengal was not even mentioned once. He said that even the freight corridor from Dankuni referenced in the budget was originally announced by the then Railway Minister Mamata Banerjee in 2009. He said the constitution promises equality among states, but this government practices preferences as allies are funded while opponents are starved. Janata Dal United MP Dileshwar Kamait said this budget will serve as a boon for the nation and the public. He stated that the Prime Minister Modi progressive and the visionary policies are empowering all sections of society. Kamait also stated that the budget paves the way for the development of farmers, youth, women and all sections of society. BJP's D. Pundareswari said that the budget takes concrete steps amid global uncertainty. She pointed out that the free trade agreement with the European Union is likely to come into effect in 2027 and therefore domestic capacity in the country needs to be strengthened. Referring to Andhra Pradesh, she said that the budget's announcement for sandalwood cultivation and processing will be helpful. YSR Congress YS Avinash Reddy reiterated that the demand for fulfilling the promises made under the Andhra Pradesh Reorganization Act
SP's Lalji Verma said the budget is a jugglery of figures and lacks the solutions. Congress MP Karthi Chidambaram said the implementation of many schemes announced by the Modi government over the past 10 years is very poor, and the finance minister should provide details about this in her response. He said announcements are made in very budget, but implementation is lacking, which is why the public and MPs are losing interest in the budget. Shiv Sena UBT MP Anil Desai said the new labour codes benefit employers and make no provision for the protection of employees. Desai said the budget has made no mention of the goods and services tax, GST says. Congress MP Rahul Kaswan, citing the Rajasthan High Court's comments on the state's school, said that the girls drink less water in school because the toilets are not working in condition. He questioned the budget announcement of the opening animation, visual effects, gaming and comic labs in over 15,000 schools, asking from where would the trainers be found. He alleged that the Prime Minister's Skill Centre have become mere certificate distribution centres. Kaswan also claimed that the projects launched in Rajasthan under the Jal Jeevan Mission in 2021 have not been completed yet. Citing the decline in coconut production in Tamil Nadu due to root-related diseases, T.R. Balu of DMK said the central government has not yet taken any steps to address this. And now a review of proceedings in the Rajya Sabha. Writer is Kumar Rahul of PTI. The Rajya Sabha resumed directions and discussions on the union budget in 2026-27 today. Participating in the discussion, Shiv Sena Rajya Sabha member Milind Devra today took a dig at Rahul Gandhi's dead economy marks on India. Devra asked if India's economy was indeed dead, why did the EU sign the biggest trade deal with India and not with China or the US, and asserted all countries in the world want to do trade with India and wanted to sign trade deals. If India's economy is dead, he asked, how is India the fastest growing major economy in the world? How is UPI processing over 70 crore transactions per day, making India the global leader in real-time digital payment? He also pointed out that the Jan Dhan Yojana alone brought 50 crore Indians into the formal banking system and transferred 41 lakh crore rupees directly to citizens, saving 3.5 lakh crore rupees of taxpayers' money by preventing leakages and inefficiencies. Besides, the gross GST revenues increased from 11 lakh crore rupees in 2020 to 22 lakh crore rupees in 2025, effectively doubling over 4 years, he said, adding this would not have possible if the Indian economy were dead. Countering senior Congress leader P. Chidambaram's remark on the lack of private sector investment, he said private sector investment have peaked to 6.5 lakh crore rupees in 2024, which is 66% more than the figure in 2021. He alleged that the draconian amendments brought by the former finance minister in the Prevention of Money Laundering Act made it hard for entrepreneurs to do business in the country, and also blamed the UPA government for ignoring the manufacturing sector, a key for creating jobs. Surendra Singh Nagar of BJP also lauded the budget, saying it is an important step towards Viksit Bharat, and said the spending on infrastructure will help propel India towards its goal while helping its citizens fulfill their aspirations. Opposition members, however, continued their attack on the government over the budget. Kanimozi and VN Somu of DMK termed the Union Budget 2026-27 as a failed budget which is anti-poor and detached from the country's reality. She said there is no relief for workers, farmers and the middle class and continues to favour cooperates. Neeraj Dangi of the Congress said stock markets crashed on the day when the budget was announced and many investors lost lakhs of crores of rupees as the budget failed to meet the expectations of investors, market and the common people. Shukhendu Shekhar Ray of TMC criticized the government for failing to come up with concrete steps to address unemployment while highlighting the challenges faced by the jute industries. During 0 hour in the House, Congress MP Mukul
Balakrishna Vasanik asked the government to come out with an annual report on social justice and table it in Parliament on the lines of economic survey. Raising the issue, Vasanik said the report on social justice must systematically evaluate existing legal and policy frameworks to ensure they meet constitutional mandates. It should focus on security to examine the implementation of various schemes and laws that exist for the protection of the life and dignity of persons from the disadvantaged sections. KRN Rajesh Kumar of DMK demanded tax exemption and enhanced support to the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. It plays an important role in agriculture, credit, rural infrastructure development and helping maintain incomes across the nation, he said. However, the financial framework under which NABARD operates severely restricts its ability to fulfill its mandate, the DMK MP said. Kumar said the imposition of income tax on NABARD affects its operations and drains resources. Kartikeya Sharma, an independent, urged the government to regulate online gaming from developed to streaming to ensure that the digital space is safe for children. He also demanded that the government should grant official sports status to esports, which is recognized globally. Sharma said India must recognize the orange economy. Our creative and digital sector is no longer a peripheral industry. It is a vital pillar of our $1 trillion digital economy goal, Sharma said. He said that India's creative economy is valued at about $30 billion, contributing to nearly 8% of our working population. Sumitra Balmik of BJP also expressed her concern over the increasing use of mobile phones among children and their exposure to social media. The BJP member emphasized the need to implement a digital detox initiative to promote the overall well-being of students. AIADMK member M. Thambai Durai demanded that the Valmiki community should be treated as a tribal. He said then the Chief Minister of Tamil Nadu, J. Jayalalitha, had passed a resolution in the Assembly to include the Valmiki community in the tribal category. The Valmiki community is currently treated as a backward class in Tamil Nadu. Earlier, responding to a question in Rajya Sabha, Union Health Minister J.P. Nadda told Rajya Sabha that as many as 11.05 crore children and 3.75 crore pregnant women are registered to UWIN, the portal for managing and tracking routine vaccinations for them, as on February 3, 2026. Nadda said every beneficiary can download the QR code-based vaccination certificate from the UWIN portal. In 2025, 8.01 crore beneficiaries were registered on UWIN and the QR code-based certificates were made available to them. BJP MP Samik Bhattacharya raised the issue of encroachment of Kolkata port land and said that the area has publicly been referred as a mini Pakistan by city's mayor, a remark that led to uproar by the members in the House. Minister of State for Ports, Shipping and the Waterways, Shantanu Thakur, admitted that a large portion of the Kolkata port's land has been encroached by People's Association with the ruling TMC government, and the port is finding it difficult to get back to the land. While another BJP MP, K. Lakshman, raised the issue of his party candidate committing suicide in Telangana a day before the municipal election, leading to noisy scenes. Chairman C.P. Radhakrishna, however, did not allow him to speak, as a claim to lead to an uproar with both the opposition and treasury benches trading charges against each other. Soon after the House met for the day and after the laying of papers, Lakshman sought to raise the issue but was asked to speak later by the chair and allow the 0-hour submission to be made. As Lakshman continued to say the BJP candidate in Telangana Chief Minister's constituency was being forced to withdraw his candidature and had committed suicide a day before the election, opposition members objected to this statement and treasury benches were on their feet. This led to uproar in the House, with the chairman urging both sides to maintain calm. That's all in the Parliament Review. Hey, Akashvani Lungle ni Chalai te Hun. Chalai te Hun kan lo thleng le ta kan program ngai thatu te che bai ule zanina hian remoi le mizo chalai te ti thupui manga income hona kan ngai thadona hun ron mang tu tur te hilal rin feli haw nar le achian te bazar veng long le me te an ni ilongai thang How you feel more than words.
that you love me. It already know. À, một rộng cái trời khác giang lâu em ấy. Rồi là ô titi mấy mẹ của miang. Thế cần tùy thấu bọc xe bạc à hey rồi lại Mizoram à thế chalai thì hi remoi lama hian I kan in mang tama kan tharial ka she boka he tiang lam pang vel hi in sui mi tiang mu ai nge Mizo hi chalai te hi kan Mizori moi lama kan tharial lo ma nge tun kan din hun te nge niang Mizo te tan hian Mizoram chunga e zon na te na tlak kem ti te amo nge khatiang vel te kha Mizo tia lung lei bi ka pe chuan musician in thalom no to ka ma te nia tro tina e shiat lo I in po chok em lo mo in ti la tum lem lo ti me underground kan tiang chi underground tiang chi hin tam no to ka platform om lu tuk lo wanga mi na kan shiat lo me hi mo ti hin tam no to hi nge dan les tha lung lei hi kan population ngai to chon tha chu ka ti viawa mà sẽ cần tay mạc na hiện lem chuan min bộ bệt tiêu mà nhớ thì cái chú cái tiền như vậy thì thôi rằng dụ thì mấy làm dụ tôi dụ thì cần culture hiện music remoi hi ha bệt được tất nhiên chú mizo te kan alo kan mizo te kan chi kan ta mo music kan ru ông tiếc hết em nằm chỗ cổ khăn trái sỏi tay là cổ khăn tin hiền giải pol cái này với cái này giải pol cả luôn chăn cái mà nghe remoi chuan cổ khăn tin hiền giải pol cái này à chuan bia là nghe cái này đều vứt bốc à chú Mizoram pumpui chú mi bia headquarters angin Sinat BCM PYD tiang zong khan music khen min chian ne mizo de kin mo tun zai po lang tu nia chumi mei lama kan pi pu te hun lai tang to zo kin khuang te ne ne got pon kati khop khanin an zai kho ma mo khan tharau pol na te hlim na ten changa khang hun lai tang de to khan pi pu te atang to khan rimoi hi chonin big takin mizo te po na sa takin tin thim nu ril ro khanin na lo thok tik to ti kha chiang rang me to nei soi na yang tang po khan mo chu ko khan nan sei ta ko khan a po I entinan ko khan tin a hian thade de filor de play theve versatile lut an tam lut ta ni ma sengin music kan se a remoi kan se ma se ta khan clear khan le thei chu church music a thalut to kan tam ta ni hian adik che kin a hian church music a thalut to abikin ka kemala ka play bi ka khia da sen keyboardist pianist ti meang an thalut to ta ni be na an chatlang pui vek keyboard a church ta le ta ni mo an thalut to an tam to lung le hian in khor chua ngai ti meang a khor chua ngai zak zum deu te an ne chon boina bo kai khen na kan farm ve ga mi hinia kan u hian kan nau hi thateu mai hi oma phaya hian kum som pariat sorry kum som ni pathum ni liwe chaw hilan ya temo phai vela hian kunga khon ben ho ten an pot kol thina tia ei aple the ve khatiang te kha hei an tam nu to ni chu sem khor cho lo hi chu tak cholom lung le hian in platform thadeu antina sarkar hian mi han pui se mi han siam sak se mo ting de om se khang hoi ho cho theina tur kha ông thì xem chun khi cái acha cái gì đấy hả đậu đậu có bị vang tổ tụi cái rồi lúc lễ tiêm thì tôi đang ông tập ông nãy đó nó mì tập lắm sâu cái festival tập ông đó nó mì khá lấy trang bùi rồi mọi anh tin anh chị khá lấy trang music festival thì mình không được to bara ông tụi bọn anh soi không ở đây bằng mà sẽ khát ya khăn soi ta khăn platform hắn ông thấy sẽ hi cần tiệt chi na mà sẽ mizo chu cần soi yang deu khan hay car tin music cái tụi tan chọn biak in ate koshana te khát yang khăn opportunity cần để trả này chu nam dang này na cần dang làm na deu chu nam dang à chuan hey
play by ear an ti mai mo beng ngai kha ka atanga play thei hian tam lo ni chu a zira zir lo phei chu mizowa chuan tuna kan musician tam takhi zir chhuak le he technically antianan khe a zira va zir chhuak ai hian tuina awang shim shim ma ni an twal cher hian tamani chu chuan kha platform ron se ta platform ti a hian ingai dan ki chu ka ngai dana chuan ingai dan niam ka shelawa platform kan han ti ta platform ti kha stage kan soina de ber chu de me tro lai lung le bi ka ta cha non pho chwa na kha ani ta ma se tun han ngai to ta ula kan milar te mizoram manga te khovel pung hwa pa po ni se he lai to pa kan hu reng he aron lar chhuana chu khalai stage a khana wazaya tini mi alonya o tunang la ya chuan turo ni to ya o asan chu la anei vea bedroom atanga ni lo ti ve re ka mai no rin pho chwa ka mi shet lo lo ati te mo tunang APS aron zaya zone ta on zaya ti khani to ni de o ni vak ka tiang aron zaya to ka chuan la ti to platform hi apoi mo rual hian platform ai ma hian kan thalai te musician te zai thiam te hian enge mani ina kong indap chok ve de te hi tun lai de chuan phone a kan khoi ve ka reels te kan khoi thiam eng tim YouTube kan thiam tro 2 point kan siam thei vek platform khan indap chop han ti ta ka chon ne tun ma kan no pan deuh lai te han sei ve ta la music about khan rora ta kan thir lop loba mi ban khur te kan lai ve thawa subject te kan zuara mo chuan kan ngoro tum khat phei chu thing pui fe mizo thing pui fe te hi kan zur ati khan kha kan chul lo na khan cheng sang electric guitar second hand atha then vela ni tawang kha cheng sa ko som kan le a kan guitar be chu po mi bal ta po ne lo ne kan han su kan han tu tak tak a kha ma ne a tum again yang achil tak tak na le tum tak tak na tum ru na kan nei kha chonin ko hi chu lo ve mai chu khon ta chu 90s chho ba khan ve ri to ne re ve to ri wa chu hona po chon tiang khanen tum tak tak na hi chonin ma ne tum ru na hi a le lo la hi poi mo ta ber chu ni zo thare tin a pik taken ne tun lai khovela phei chonin hei engkim facility thalu tuk to zok hi kan no deu ki ti lam minti pachel tu lo zok hi ni minti pachel lo tu zok hi ni ka hredo laka thil ol sam to lu tuk te po hi mo chu wa chon tun ma de kha chon chu ke ni po kan no pan ve de la de kha chonin hun le tha sen tak tak kharin kan fight ve ni kan be ni so ve ni kha ti vel kha alo ni ta tun lai anga chon khatia em han ti kha chu lo ngai to lo po ni ta selen jinen so yang de lek mani bedroom emo hey engan yang mani in kon find de lek ka sur de big lek sur de lek big nei ang chi slap pho ko ta po ni thenga music a technical lampang je ko ta po ni thenga ti chung engan yang tun lai le man lai kha kan ron khai khin de ro lo the lo ke ma chuan chu wan chuanin amaro chu apoi mo ber chu man lai pon chu kai ni no pon lai te pon ni se tu lai pon ni se hela ya mani moral tum tak tak na tum lu na tak tak lung kan ne le ni lo la hi poi mo zo la poi mo ber chu lo tun lai hianin thili ol sam to tuk ta a ol sam lu tuk hi nghe nè cần mà hiện thì lo ôm tóc xe thì tóc pila thì na mà nghe vật tụm na mò khá cần này tổ lâu đấy mò có thể chọn tụm mà alo khá lâu cho rồi mò thì na thế có ngày tổ musician live music tan bị kian talent show thế không nhỉ ông chuyện này khá lâu lệ thì bố cái làm cái bị guitarist sakhanin remo na hi guitar solo remo na veng lai somo guitar solo ne in khami talent show khan rei tonia khala khan bon to tu la remo na khamo tu ro tu atia insa na ngeni pati na nge tv te ni dei ni mo ni dei pakhat na ka khami tum kan talent han an te entina tu na join private farm kan ti ta entina tu na po local cable te kan nei ve a LDF te LDF trong mình cái này zone te pa en hong viem ka he ting song a long lo se a mai ro chu
khamiwa initiate tu kha kanam lo ni music bi ka chuanin khatianga vatiang tu avatia varon tu kanam no ta tun ma te ka chon kha eldo te khan ti ni mo na chang LDF son te portion tu na chon anna chang thlo me ni kharinga anna ti va nga nyang va mu ti chuak van nor chuak tu le va soi mu tu om choni tiang te kha platform ti me ang mo khatiang talent show te kha anla ti thei le tu ni ju hian chu va soi mu chini la anti karing tat zone pe chu anti thei LDF pe chu yu dai do TBC te ho ron la na ni ve ta platform kan han soi ta tu na te chuan engineer zai mi ta musician bo tu na chuan remoi te tia khan hei na china champagne soyang deu khan na chuna soyang deu khan hei a chen chu ma ni tui wang shima i ti ve khan omanga lar chwa po chak lem lo ma se tui shim a chen te chu i thiam em azira zir e zon na po mang chun zom du nge te khan om lenga chu tiang mai ba ka hemi stardom shim i music awanga e zon na le lar na ang chi khatyang ang lampang ngai tu khan om bok ngai shem khang zinga khane e zon na mang tu e zon na man tum le lar chwa tum ta ni mo kan soi de ber chu lai tak chulom i antiran e tu na te po ben kha tak te kan oma inform sa mo lung le pian bikin i an inform sa e tu na ko chop tok pon ni inform chop pon tha tak hin tam tu ni nak tu za ron zai thei ngem no ti a thei to walk sa chu bet pa tal chu khen lo in tam kan vision ni lo se kan vision tu kha Mizoram pon mo lung le ni lo Mizoram pon a khonin competition kar khat po tling lo ni vel zuk zina sumo zuk pon mo sumo te kal pon sa lo ta expensive den kal thia zuk mani zukin fianan mo kar khata sing ruk sing sari noi khat zuk lo theni tamani khung lai kon festival te bi contest tam la tuk kha khami lai takha zuk in rek zuk in nge yang zuk hai pe semo chu te i sia englo pi chu khung lai pai vel chon opportunity tam tereng me opportunity tam tereng me mara chu hei kha anita Mizoram po na te mun dang danga e zon na music remoi mangin I zai mi emo musician tan po kong tam takom ta ma se khami ba ka khan Mizoram chunga po hian om tereng an chu hei chapa po hei music school in nei ta music school ate po ronzir chuak an tam to anga ronzir chuak te nge po soiturishin wa lo mi nge moni ming cher chho ve de to te po eng moten om lo ma lo mo khanga phe ka chuan nya in soina enga khanin nya khalam pang music a yen e te po a omani ti lai kha e thiang in soi kha chak om ve riwa khala kha thian ten soi wal to thona chungin music school ate anon culture na great nei te pon great exam te pon kan lo buat sai thea azir lai te kha ti chonin kan zir lai then khat te pe chu tu nain soi enga tang tho khan tam tak pha ya thon thlak ang chi te po internship ti lai atangin sing ni sang ruk ten la ti khan an tho len pe ka chuan cheng sing ruk le department provide club chu en mudei min music school tang po khan mo kha khan ya ka skate education music education restaurant te hotel te 5-star hotel te an play ta chonin kha I thabi khan kan zut zan khat chu dei toy ben ni kan hrenga hi adin tir don khanin mizovek ni thailo tia kan u toy hen min wati pui te u te kan va zai chin zan po khanin Indonesian nu pa hin lo oma kini kha chu trial mai ang khan ya enge an don ti ve kha chuan Indonesian nu pa te pe kha chu khati hun lai kha sang ni pasari no sang ni pariat ti borvel choni dei to ta an nu pa khanin thakata cheng noi khat ve chuan karan provider I apartment an in om na tu nuam sa tak kha chu khati hun lai cheng noi khat ve la lu chu tu nang hun chun han chut mai ula mo e hi om kan ti tak pe chuan om zia le om zia le approve kal o shilang chu kuming zat kal ta ngai ti kha kuming zat kal ta ngai ti kha sa ni pasari sa kum somaliam to ta khang hun lai khan Indonesia le Filipino hi India ram hotel zong a hian atam zo ka han anin ti mu ta ni chu an cha lu thina an tam reng ta za hi ma se tuna hian hei
India ram hotel Hyderabad Bangalore Mumbai Kolkata India ram puma ani chu I Goa te thleng khwan foreigner hi mu turun to lo chan chunga tinge mizo in an luan he to go ti bongan tam mo mizo fek kan ni deuh to ni chu chuan khulaya entertainment agency kan ti hetiang zai ho la thin te hi hian enge vaitan lo ni ta hi namdang ai chuan mizo kan du zok rampon na mi lak chuan ngoi khatpek ai chuan helaya mizo nula zai het timela kini pokan ni thofanga o achan chukan hau tak lova ba ka hey thiam tak tak te lai tanga zai pon ni melo tong moi lo ni lo se kan zai pu chin ti a pon ni thowa helaya tra ala mizoram a phe afasai thiam fak lowe kan ti tur po hi khunga chon thlakata cheng sing ruk sing sari lo na nam de si mo mizo ti mo kan van ni na mem chu mo mizo bi ka India as a whole emo north east anga poni se mizo kan nom to na chuan namdang te hian in se thonga I selo te tan po lung ta se ngai to na ti zau tu tan mizon om to chuan guitar tum thiam emo zai thei tur hian mi hin da han ti hriat tu chulai chu la tingai lo te po kan omanga nakina I hemi music konga ron hudu tele khami konga ra biron rap tu te tan tong pong polo ral khel be vak vak le khatiang kha atul lem lowa dai lu popin ti kha taimak na le rin om ne na ti tin ni om se ni in lo seta antinan music a hian remote a hian ya om kan ti ta masengin tuna chung ko sok chom ti tan chuan lung liang te chu angai antinan kha chu pocket money side me anga kana ngai ki ta masengin zukin ho lok teang ti chuan di kum tum po phai zu ma lu ka zu kom chonin ai zukin ho chau thei ti kha a fiat ta ni chu in se tang po khan le ka experience a po hianin khuda phai ran ma pon kan chen hui zai ta ni ala lut nem lu tu khi poisa man te hi engen yang lung te man me ol la to poisa hi atam ma to ka 5-star hotel engen yang JW ti engen mani engen tam lu tu ka sui ho ta ni kha de khan pianist khem te khan lu du pianist thin lu kan ya piano lo chopa piano pa ngai an lo chopa so dar ka khatwa play la cho wa ti khan ta ni ma se kha chu ka pe lo pon ni lo min ka tum na khan ni lo wa ka ti lo ta ama sai te kan keyboard ne kan play puya an nuam ni tu ta ni hey chuan chu mi zo wa hianin tam takin musician kan no ma ta hianin kan chu commercial tui wanga wat hobby anga va play kan ta tam ta kan ma se zum nan tak kata na mang du kan omani hi chonin kong hi azao ji kan se thi ngai tro hi kong hi zao je kan pyak kan han soi ta rampon chin boundary dai dar ve da ulek se mo chu tak chu kan tung lo ke kan pe lo po ni lo kan ti tu kan da lo de tat lai mi zo thalai te ya hela hi kan problem tu ni ta ba ka mi zo chu western music kan ngai tha kan thiam lo kan thiam ma hemi kan thiam na western music kan ngai thla kan thiam na hemi chance kan nei na ber chu tu na kan thian tel lo so yang ka pha ya zu zai ka abak chu chance kan nei vak lo western music khatia classical music Indian classical kan tan bol tu ka so kan ro Indian boxi lo kami kan soi rol khan mo chu ka ngai poi mo le pakhat ve chu hei midang tina po an lo tang kai pui ve theinan ti ni chu hei ka shil thin chu masa ke my experience as well so soi tum to ni ga hindi la thiam kha poi mo rolin mo ai entirnan zai thiam tam tak kan rol hian zai thiam hi som lo om ta se a o po in ang thiau ni ta se zaidan po an otlim tok te an lat sak moi dan tin ang thiau ta se zai thiam ro rawa khan zai hoi deu big te sha thiam em zai hoi te kha pian puan om me lo in zir chop mo experience atang ten ni ta chuan mi biang biak thiam te chuan ma ni nun rimoya hi chuan chu nu le pa ten mani fa te rimoi lo chilan phal lo na tam tak chu Antinan church music ni lawa ezon na lu chinan phalo na tam tak chu rui thei thil ne in kai hnoya ta nan da thin ta ni chu
khata tak khan tu tan po eng na po he helaya nge MCS nge Central Service Exam ati an lo ping lawa rui the thil ti an du lo ang bok khan rui ding lo music po hi e zon na thiang lim turania thatak turana chuwan chuan rui the thil atanga film sham hi lo tling turana po mo verin ka sha o kovel po mo pin engลูกเชียดปุ้ยจะปนอมตัดตัวบ่คลายจวนนี่ตู khami bet example of ang kan nu le pa te po yan o an nu le pa te han an fa te music zirtir ai chuan be a training tir te khan du zo ka helaya i college kal tir sham te khan du zo tak thina ni zo ai allow i khala kharin chu dia thil lo ni lo thlen dan to le lo ni phung lo ni het do to ani ba se tu lai te mi tun nai so tun generation han ti to men heti nga hianin mizowa apik taken kan musician te zai singing artist te poni thega he ho lar tak zinga po hian educational background nei thadeu di thau si khati angzonga rui thei thil chu sei lo mo an be fur to ne to e maklu tuk tur lai do pang hi mo man lai anga hei to sari por da chu me za zu ruk tur mo ngai tlat ang chi te kha ani to mi ala zaw to lu tu mi lai tak thil tha le thalo kan thiar thiam ta ni chung point en kol dan hi poi mo lu ta ni tu lai chunin i music school te hi a that to em a lok to em ni chan chu nu le pa sa som riat thi ka tingam ngam o e nu le pa e fa te ma khongai ho chuan an fa te hi le khazir mur an ti to lo tu ma co-curricular an ti tira i sport ani lo pon music class an kal tin nge to chu chulam teacher tutor te mang musician tha ho tang po home tuition thlangin music po azir ki the tin khop chuan du to chu ko ran e mizo chu kan rilwin ko ran hi alian ta ko ran te musician te tangkai se kan du ni tlam puin le an hun non ho khan nang khan computer games le phone khoi tir tu man at tam zo khe kan du to lo chu ai chuan music te si se kan du a sport te ti se kan du chu men khatiang khan I kong hi tam no to athiam tak tan pe chuan dik etinan I grade ta po grade 8 thleng ni pong ai lo grade thum I lek po ni se khang ho kha a basic an si ri the ka khatiang thleng khanin e son na hi ta an moi thleng en om ve kan ni mo hei sai ta tan ti to pon chu music hi a zaul to ka lo le yan ril nei tak tan chu khi to om thei na ne khalai kha kan lo chun som sok teng ka music sai vortex a po ma kan la chho ve bek ta I seki beat contest a I bass drummer dong the ngat te I kan kut chuak ten lo ni ve a ti chuan mani experience a train ni chu mani experience a chiang bera ti chuan I china kan chen te soina enga khan I degree nei duan ron zir du ni pon music te chu practical ania pon is practical ve ne degree nei duan ron ti don ni pon hei kan student a al cross moi lunglon son nia anu le paten an tui pui bokan unau so East India Rock School London certified ni turin to parar ni tlat me East India han mo chung te po chu degree nei na tin ni china kan chen so yang khanin grade 8 emo diploma emo vachko kerngai lo khan grade 5 atang pon teaching pe thei tura I Indonesia chon china kan so yang khan le talokila Mizoram nge ya lo pha ya tin sarkar thar den no ma hei new education policy in te mi te nga te bukan nakina co-curricular school tina subject music alo om hun phe chun state sarkar ten an han ti lo tin thei phe chun mo dunge music teacher hi kan mo sup lo wang ti soi thei mo kan ram chunga nge po zel din thu la po lo ni ta se mo khang te po kha nya I chuan nya ka eng lo te ta ke pon in soi na chuan he mizo thalai te chu music lama rimoi lama kan tui em a I eng lo ke nge soi ngai lovin rimoi lama kan tha lar le zai lam pang rongot ni lovin enge education teaching line a po na tam tak om ti kha kan soi do chu ni me lom ni voinia chuan ro chu hei lung le nge ya po music zirna oma an ziranga zir chuak nga na dang kan try ang puk po yan music teacher te mo zir ma hi kan son re mo hei kan son dan re ta hi la du thu la sam lo de ti khan do mai thale me ma kan son thalu tu kan zai le tong myang guitar chu chiang le de tong em
la khat chau sa leila oh la khat chau sa leila Angai ha ka ti le le nga ni mei don't let me have se kan to na tin lai zo chu zanin thalai te hun ran mang tu te kha lerin feli haw nar le achan te bazar veng lungle mi te an ni a an thu pui khari moi le mizo thalai te te ne akashvani lungle tanga puan chhuani. This is Akashvani Lunglei broadcasting on FM 101.9 megahertz. Good evening, everybody. I'm your RJ Lerin Omi, presenting tonight's youth program, Western Music. Tonight, I'm going to quickly
Hey,
Ole chu ti zong chu zan ina mara hla kan ngai thla khuna ECM ko shan zai pol sia ha teleram kan ngai thlak the chu ni he Akashvani lunglei ni dar kwale minute sompanga a hian spotlight delay mi kan la chongang. Anup Girdhar, cyber security expert. Dr. Girdhar, welcome to Akashvani News. Thank you so much. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah delivered a keynote address at the National Conference on Tackling Cyber-Enabled Frauds in the National Capital today. The key objective of the conference is to build a shared understanding on the scale, trends and evolving nature of cyber-enabled frauds in India. So Dr. Girdhar, as we step into the discussion, cyber security is more relevant today than ever, and almost more than 85% of households in India are now connected to internet, and the cyber security incidents are on a rise, which is very natural. So in your opinion, what steps have been taken by the government to deal with the rising incidents of cyber frauds? You have a very valid point, and as you said, our Home Minister Amit Shah ji, like they explained the real sensitivity of this particular issue. So the concern is like if the internet usage is rising up, that means the demand of the digital assets, digital data is there. Today we are in data era, and no one can get into the involvement of all the existing models. So we have to connect with that. That is why Government of India took a lot of initiatives, especially you must have seen the awareness issues. So that is one of the problem for the public, that how to deal with the cybercrime. And for that, they have portals like cybercrime.gov.in, where in case any incident being occurred and any type of cybercrime being involved or being held, so we can report. So it's not only one way, but other way in case of any financial frauds being committed. So for that, again, we can report to that portal. Otherwise, there is a one direct line, hotline, that is 1930, has already been initiated by Government of India. That is very quite often, and hope you must have seen in the previous months, the moment you are going to make a call, that was not a ringtone. That was again the awareness message in case of any cyber fraud, please connect to 1930. So that awareness kind of activity is being taken care by the government. Already I connected to law enforcement agencies. So I have seen the insight. Frequent trainings are going on for all the investigating officers. All the top officers are involved to deliver some cases, and they are indulged into those cases with the like a mock drill sort of things are going on with them. A proper trainings to be given that how to handle the certain cases, sophisticated cybercrime cases. So that is to be taken care by the enforcement agencies. For government assets, there is a special departments. Already, if you know, in according to IT Act 2008 amendments, you must have seen, the CERTAIN was one of the body, Computer Emergency Response Team, taken care by Ministry of IT. Apart from that, now we have NCIIPC, which is taking care for the government infrastructures, that how to handle all those things. All the dedicated services are being provided. And again, you can take a look on NIC, National Informatics Center, who take care for all the information, all the data, domains, IP, traffics. So that is to be already mitigated, controlled. For intermediaries, that is another stake. Telcos, fintechs, they are also being aware, and they are already have the lot of regulations being introduced under IT Act, and that information is already being circulated to various intermediaries so that they can interact. They know what type of challenges are there, and as and when being reported by the government or law enforcement, they're supposed to answer their query at the earliest. Okay. Generally, I would say 72 hours is the span of time like they will take for each case. Somehow, depending upon what is the sensitivity of the case. It is mandatory now for every organization. Hardly matters whether it is a school, college or university, whatever the courses are there, it is mandatory for them at least to give some cyber awareness Okay. to the students so that they'll be aware what they are doing.
So these are the already initiatives being taken care. Generally, I used to say to stop the hacker is to think like one. Government is also taking that initiative. They are already onto it, which is the best part. The Home Minister, while addressing the gathering today, spoke at length about the cybercrime and the efforts of the governments. Let's first listen to his words. गृह मंत्रालय स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, CBI, NIA, ED, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सचिवालय, IT मिनिस्ट्री, RBI और न्यायपालिका, ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं। जब तक अलाइन नहीं करते हैं, संरेखित नहीं करते हैं, हम इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और मुझे विश्वास है कि CBI और I4C का ये अनेक सत्रों में बटा हुआ प्रयास और सरकार के सारे विभागों को अलाइन करने में, उनके प्रयासों को संरेखित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। Dr. Girdhar, in fact, as you spoke at length about what initiatives the government is taking to deter the cyber criminals to indulge into malicious activities. So here I would also like to mention that the budget this year, it has been increased to 790 crores. So the government also understands the need to increase money to equip the infrastructure and other materials to stop cybercrime in India. So what is your opinion on this? I'll tell you what. Already I have seen many government departments are still not equipped with that level of technology, and many enforcement departments also need to be upgraded. So that upgradation is a one part which is required, because today we are not starting from a new go, like we want security or something and we need equipments. Already equipments are there. So whatever the budget already been involved and the equipments being already installed for cyber investigation, it is there. But now still we are facing a lot of challenges. So government need to invest more money, and we need a specific type of areas for innovation, for upgradation, versioning, and as the the volume and the velocity of the crime which is increasing from the different angles of the spams, like spam call centers and all that, so how to mitigate all those things, accordingly that budget need to be incorporated. You will talk, in my opinion, even I feel I prefer, like you can see very soon whatever the security equipments being deployed, we'll talk like the concept called cryptography. So it is already threatening that if quantum systems are there, they can easily bypass cryptographic algorithms and we can decode it quite easily. So decryption is quite possible. So the concern is, if we really want to stop the hackers, again to think like them, we need similar kind of infrastructure, because quantum is available on the cloud. Any user can take a services. If you will make some payments from the cloud servers, you can execute your applications through that channel and you can get the results. Already new technologies has already been augmented, like blockchain, if you will talk about, for transactional models and other. So we need similar kind of setup to be increased. Obviously, all the departments, given their requirements and accordingly the budget need to be decided, and a lot of challenges are there. So obviously that, but yes, as per the policies, the things which are going on, whatever the budget we have, at least we can start, we can initiate. We'll come back to the event today, which the Home Minister today launched the State Cyber Crime Coordination Center. And I would also like you to explain briefly what I4C is and what its role is and what State Cyber Crime Coordination Center will do. The best part, this is a kind of a bridge between government and you can say at least the public, or you can say the corporate, and real-time crimes which being coming across. So that becomes a kind of one of the front end. So I4C is one of the best, I would say, and they are doing great. I've seen personally and going through with the various different challenges. They are giving awareness programs. They're handling certain tasks. So that is what, like the initial level, at least. So government would not directly want to enroll with the public dealings, and also at least the I4C is one of the best platform where you can find and place their reporting model. They have a good staff who take cares for such kind of things, and they will to create a bridge between government investigations and to the common problem statements, whatever is going on. So this is the best practice, which is the way it is. You can say, take it like it's like a edge to edge.
So state to state, whatever the state level problems are there, we need I4C for that state level. And then we need a centralized or at least a semi-centralized model to incorporate all the problem statements generated by the cyber related and cyber issues. In fact, here I would like to draw your attention to Unified Payments Interface UPI. Everybody is using UPI. UPI and the use of it is on the rise in India, and so is the fraudsters' activity on UPI as well. So, are there any initiatives that have been taken by the government to tackle fraudsters from misusing UPI? Yeah, very valid and very great question, I would say, because the best part of Indian techie systems and adapted even by other countries, that is UPI. So one of the best model of India, which is UPI. So the concern is, as cashless transactions being going on, any transaction to be taken care, and it is to be recorded by the banking system. So all recorded, all measured in a proper way. So for UPI fraud detection, government already initiated many, even Supreme Court judgments also there, if you will just find out. Because today what happened, if any fraudulent transaction being committed and victim report, now there is a concept like time sensitivity is the issue. If we'll report, means according to the government, if you make any payment via UPI and you feel that's a fraudster who take your money, and even you pay to unknown number or incorrect number, or you, while typo, there is an error, so you make some payment to someone else and that person is not returning back, or some such issues are there, so immediately that dispute need to be reported to 1930. That is first part. Initial, for a victim, they have to start like this. Second, they have to report immediately to their bank or all these fintech apps or non-financial banking apps like Paytms and Google Pay and all that, so that they'll identify this is what being done, and their UPI, where the funds being transferred, their account to be freezed within fraction of hours. So that is the best practice. So immediately there is a reporting portal taken care by all the fintechs and banking systems. So the moment you report, they'll immediately freeze their amount. So according to the Supreme Court judgments and various other things, that the amount, whatever is being transferred, that much amount need to be freezed, rest of the amount and the entire account should not be freezed. That is the first kind of a verdict. At least the people who are facing such challenges, they should be aware of. Now, how to resolve this dispute? The best practice, if you got some intimation from your banks that your account being freezed for so-and-so fraudulent transaction, immediately the first step is we need to report to the bank, go to your bank branch, talk to bank manager, ask them, give me in writing that which police station or any cyber cell in India who reported and they requested to freeze my account. So you will get the information from where that dispute being raised. Okay. First. So the moment you got it, immediately now what you need to do, you need to give your statement. You have to give it in the writing that this is not being taken care and this is not a fraudulent or whatever, with evidences. That suppose somebody gave you the services and for that you must have some bills, invoices. So you have to raise those invoices with all the transaction details and you have to give it all those details to the law enforcement. Talk to their IOs. Those IOs will take care of your case, and if they feel something is good, immediately they'll generate a NOC. But in case still the things were not resolved, you can involve some advocates, go to the court, show your details over there, the notice, and again there is a judgment or a verdict being issued by the courts that you can go and unfreeze those accounts, and that goes to the police. Police will immediately raise the NOC, and that NOC given to the bank, your account get unfreezed. So this is the way, this is a procedure how government is presently taking care of. Only the problem is it is time taken, time sensitivity. So first, victim need to think about the time sensitivity, that you have to report at earliest as possible. Second, the process should be clear. What is the real process? Then third, how to get resolved and how to get back with your banking and all. Listeners, in the coming days, we'll keep discussing how the cyber crime is being tackled by the efforts of the government. Listeners, you can listen to this program on our mobile app News on AIR and also on our YouTube channel News on AIR Official. Thank you so much. Thank you. Thanks for your kind invitation. And it's really a valuable discussion and the very valuable topics which you have taken care of. And that's a need of an hour. Thank you. Thank you for inviting. It's indeed a pleasure.
hei hi Akashvani lunglei ni dai phim pathian thlan hun kan lo thleng ta a tukina hun zanina hun min man pui tu te chibai atharing kan buk chewa hei tu nang lai khovela chondar kwa le achan ve hi chu alat lai lutuk lowin ka sha a chu wang chona top thlenga hun min lo man pui turin kan som tak meu meu cheu ani e ole kan hlama sabira tan chuanin olal pa itel lo chuan ti hla kan ngai thla anga hela hilal do ma chak chwakin aron sa ang ole thlang tu te kan puang nga langa ma moi tia zotlang lunglei min si dal din pui zotlang lunglei ami le zothangi te no pa zol pui veng tlabung ami te ta na than tin puketi chhona le anu pui pi mon pui khyang te mi re theite chian cha mari lunglei ami te tan ti in vi kung te a waisai zomin aron thlang boka ma shwa yi lungtan namin apapuya le te boi champhai ka rot veng ami te ta na than tin ma ki ma chongtai veng puyamin lal than za mi thil tlang ami le lal som le ani phul le na mi te ta na ron thlanga lal vulmoya thenzol veng tharamin lal ompui zamwang ami ta na than tin LBS a khol sing joy puinot wan amin muani te chung kwa ki kora mi te ta na than a thopui te zongjong tan ti in arwal chunga din tharamin hela hi aron thlang bokani olal pa itel lo chuan lal do ma chak chuak lalpanang ma ring tu te hi chakagan in ngai lai tharau riang vai kan lo nia olal pa tin ni itua chua min ti har zelang che cross pula kun ring turi min pui zelang che khopela kan nong chungin ni tin khosa buena ten min chim vela kan buai le tri olal pa tin ni itua chua min ti har zelang che cross pula kun ring turi min pui zelang che lalpai chan dam na lu hi ring to tu ni mai la ngil chang ni ya long le tri ni tin mi sia non ti ni tin ni itua chua min ti har zelang che cross pula kun ring turi min pui zelang che
chúa nun du hôm tak mai tu kan nei the na min pui la kan nun da na mi zong zong ten mel mo tình đi thua chua mình ti har zelang che cross pula kun reng turi min pui zelang che tình đi thua chua mình ti har zelang che cross pula kun reng turi min pui zelang che ole zan in dai film pathian hlan huna kan ngai thak masak ber kha olal pa itel lo chuan ti hla ni a moi tak meron satu kha laldu oma chak chwa kani nun krista ti hla lalrim ruati na emitia kan shat larina moi tak me chak kha kan ngai thlavele thungang ole thlang tu te lo puang nga lila vima ma song te elamina puang tu ta na ron thlanga tin hcc lal tlan thanga te nu pa chong te pi bethani venga mi ten ngun taka an lo ngai thla ka ta na thlan ma moi tia zotlang lunglei min sai buang i sai lo te nu pa zotlang lunglei mi le rat pui college veng lunglei mi te ta na thlan ma ki ma chong tlai veng pui min zoram engi chip phir min ngun taka ngai thla ka ta na thlanga tin puketi chona te nu pa mere the te chian chan mari lunglei mi le reverend hcivanel rat te tan vi kung te wai sai zo mi than zonun dangi sial hau mi le pc lal om pui sial hau mi vek te tan pc lal than zola sial hau mi na ron thlanga pui lungchema mi tan ma pui ram hlon ai zola mi than emlerem tluanga bulia venga min ram philiputlunga si ami ta na thlanga a ubya ki lungsana mi ten ngun takan lo ngai thla ka ta nunte i mission venga mi than tin hela hi zo thani rin pui le boy pui amwal chwa ma mi te tan bia ka mwal chwa ma min ron thlang bokani nun krista lerem ruati naimi Suana ten kanon di buai ma se yim takin katol Krista at swa nun Krista til di te na tu mang chuak che tu ri lal pa chuan ti dam le thua lâu như ta ngày mang anh na đất to chẳng quên chung lá lal pan mình col pha va thiên lunga muan min siam sap chui Krista til ti the na chu chuak che tu lal pa chuan ti dam le thua chak ka lo ni ta ka thun lo na le chak lo na ten til ti the in the cross min mu ti ra Krista til ti the na chu mang
chua đi đắm lệ thua chẳng có lâu ta lệ ba chua đi đắm lệ thua chẳng có lâu ta Ole nun Krista ti laron satu kha lerem ruati ni Jordan luipia kanin khom huna ti hla PBK lian khuman aron sa ang he laron thlang tu te chu ma moi te a zotlang lunglei min hcl ramza wate chung kwat labung bazar ve ngami le kelal than tuang ite nu pa zotlang lunglei mi te tan ron thlanga tin Akashwani lunglei la thlanna number atangin dilder BK hian pumwan zuala te chung kwa lunglei ram tharveng pudinga July ST moya RB haw heng te tan le biak chungi ma biakitan aron thlanga Dildar BK zo khosang 34 Assam Rifles Aizol ti in la thanna number a hian aron thon thlapa tin vi kung te wai sai zo amin puketi chhona te no pa mere the te chian chan mari lunglei mi le Reverend Dr. HLL Thamwana te tan vi kung te wai sai zo mi than Maki machong tlai veng puyamin Vandal Siami Darlung ami le sai kungi South Court te thoveng ami te tan ron thlang boka Ramdin Sanga Sailo sa zay kon long lemi isak rawding liana na thiala mi le lalma ma sabwan lai phai mi te tan helai ron thlang bokani Jordan luipia kaning khom huna PBK lian khoma khom hun na chan dam te ro puin kan hu ang lui pui kam ma treo chia se lo sa dan en nom ma ta su ka lam hu lui pui kam ma treo chia se lo sa dan Kama treo chiar se rosata en nom ta ka nian cham dam te kan hu kunin lui pui kama treo chiar se rosata leilung pia tirata chan dam te xua lung ngạch na lê thêm na ăn ngâm ta khi ta thiên in muin căn min to en nam ma ta suka lam hua đi cầm tiêu chia se lộ sa Kama treo chiar se rosata en nom ta ka nian cham dam te kan hu kunin lui pui kama treo chiar se rosata chu mi lui kama kan din ve hun nun na thing dai lima kan om ma kan an rang moi tak lam kan thira en nom ma ta chuka lam hu ni ka mar kyo chiar se lo sa Kama treo chiar se rosata en nom ta ka nian cham dam te kan hu kunin lui pui kama treo chiar se rosata
zong lo arelan en nomma ta suka la bua ui kama piao chia se lo sa tan ui kama piao chia se lo sa tan en nom ta kanian chan dam te kan hu Kama treo char se satan en nong ta kanian chan dam te kan hu kunin lui pui kama treo char se satan kan ngai thak ta kha Jordan Luipia kanin khom huna ti hlania aron satu kha BBK lian khuma ni Akashvani lunglei dar soma hian Parliament question Delhi mi kan la chongang ole daifim hun lo man chun zomila achiang le zwal chin ti hla pensi bi dal thanglianin aron saang helaron thlang tu te chu dildar BK in aron thlanga tin ma moite a zotlang lunglei min pi lian nu naram zotlang lunglei mi le vi lalruat moi zodin tlabunga mi te ta na than Maki machong tlai veng puyamin lal siam liani chingchi pamilya eltan moi chuan tharami te ta naron thlanga vi kung te we sai zo amin puketi chhona te nu pa mere the te chian chan mari lung le ami le Reverend Vanal ki makhyang te tan ti in aron thlang boka ma puya ramhlun aizolamin puilung chemami ta na than tin laldu sanga mautlang amin diki mautlang ami ta naron thlang bokani achiang le zwal chin pensi bi lal thangliani Kan pola
sinh cho xiang thar dê a chiang le zua chi har sa na muna a ba ngai na le a thil ti the na kara chin zela arin om na kamu ka fag zela kalal ka chandam sia yang in hun thiang lim ma min dala chutin i o chau ngai tha in ka zui zel fa vang che rin no min lal pa itan ka num to a chiang le zua chi har sa na huna a ma ngai na le a thil ti thei na kara chin zela arin om na kamu ka fag zela kalal ka chandam a chiang le zual chin ti laron satu kha pensi bi lal thang liani ni boy pui tham i swati hla arel byak sangan aron sang helaron thlang tu te chu fb live kal tlangin event en be moi hian vi kung te wai sai zo amili akashwani a hla thlang chin tu zong zong te tan ron thlanga maki ma chong tlai veng puyamin tlang than khu mi khan pui ami le lel hlim moi ruala lunga mi te ta na than ma moi ti a zotlang lunglei min sai buang i sai lo te nu pa zotlang lunglei ruat pui college veng lunglei mi le silal biak nu ni te nu pa zo hnuai lunglei mi te ta na ron thlanga tin vi kung te wai sai zo min puke ti chona te nu pa mi re thei te chian cha mari lunglei mi le reverend lalram lian te ta na ron thlang boka norin puya model veng thil tlang amin pumuan puya le puram liana pang zola mi te ta na than tin hela hi ramdin sanga sailo sa jai kon lunglei amin isak roding liana na thiala mi le lalma ma sabwan nai phai mi te ta na ron thang bokani boy pui tham iswa ar le byak sanga boy pui tham iswa atlu chuang nge ye til dang zong ayin kadam na cross pu atwar tu chu keile ka chu be ero hi zong in kal rong bol na hi kan ai sang be wai pui tham mi chua mi pui tham mi chua ja pui tham mi chua alo ni em nam pui tham mi chua lung pui tham mi chua lim pui tham mi chua alo ni em kan za pui bi lo kan dam na i chua cross tua lai bel mol katirin pu sit en dong ne sarwa katwarin min za pui nekin min ngai dam zo wai pui tham mi chua mi pui tham mi chua ja pui tham mi chua alo ni em nam pui tham mi chua
chung có tin về lệ cắm khót lang hoa ba boy bụi thăm đi xua alo ni e cắm vắm lệ nằm cô Adam na tu rem na la đi xua alo ni e boy bụi thăm đi xua khi bụi thăm đi xua cha bụi thăm đi xua alo ni e năm bụi thăm đi xua đun bụi thăm đi xua lim bụi thăm đi xua alo ni e có vel cùng chia ta cắm voi bụi rêu đô giá bụi hơi kỳ thấy căn đi lâu zoom lệ bài nông trên nắp bông số anh lắng rong bồ nai cắm thăng tổ si Boy bụi thăm đi xóa khi bụi thăm đi xóa cha bụi thăm đi xóa alo ni e năm bụi thăm đi xóa đun bụi thăm đi xóa lim bụi thăm đi xóa alo ni e lim bụi thăm alone ni e boy pui tham I swati laron satu kha aral biak sanga ni ole chuti zong chu zan in dai film pathiana thlan hun kan man the chu aloni le ta a akashwani lunglei achanga puan chwa ani dar so ma hian parliament question ar delemi kan la chongang proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. Now question hour, question number 106, श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी. सर क्वेश्चन नंबर 106. प्रश्न संख्या 106. क्या पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोलकाता के ऊपरी धारा क्षेत्र से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित बालागढ़ द्वीप पर एक नई माल ढुलाई सुविधा स्थापित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता की बालागढ़ परियोजना को मंजूरी दी है और इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया है? कोलकाता गोदावरी प्रणाली में भीड़ कम करने और अंतर्देशीय जलमार्ग में सुधार करने सहित परियोजना के उद्देश्य क्या क्या हैं? भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी और अन्य वैधानिक मंजूरियों और निविदा प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है? परियोजना की अनुमानित लागत, वित्त पोषण का स्वरूप और समय सीमा का ब्यौरा क्या है? और
शुभारंभ होने पर प्रस्तावित माल ढुलाई क्षमता, व्यापार लाभ और परिकल्पित रोजगार की संभावना का ब्यौरा क्या है? So first supplementary, Shriman Samik Bhattacharya ji. Chairman, sir, let me complete question hour. You cannot raise a point of order on question hour, please. Before asking the question, पहले मैं भारत की प्रधानमंत्री Let the house run it smoothly for the question hour and zero hour, then we will take it up. No point of order can be भारत raised की प्रधानमंत्री during the श्री question hour. नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कोलकाता जैसे बड़ा शहर तक अपने प्रोजेक्ट को सीमित नहीं रखते हुए हुगली की बलागढ़ में ये पोर्ट बेस्ड विकास परियोजना बनाया है। उससे 2600 लोगों का नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उसी दिशा में, उसी जगह में एक नया दिशा मिलेगा क्षेत्र विकास में। Now, sir, to you, I want to have from the honorable minister, given that land availability, environmental clearance and tendering have already been completed, will the honorable minister clarify whether all external road connectivity, utility linkages and district level infrastructure outside Portland, which is largely under state jurisdiction, have been aligned to ensure the seamless execution? Honorable Minister. शांतनु ठाकुर, पत्तनपोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री। Honorable Chairman, sir, I like to give the answer in Bengali because the honorable member better know Bengali. বালাগড় যে প্রজেক্টটা আছে কার্গো হ্যান্ডলিং প্রজেক্ট, যে প্রজেক্টের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে টার্মিনাল সেকশনকে যাতে ডিকনজেশন করা যায়, কলকাতাকে সেখান থেকে শিফট করে বালাগড়ে নেওয়া হয়েছে স্যার। টোটাল জায়গা হচ্ছে 900 একর। এর মধ্যে স্যার 300 একর আমাদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্টের আন্ডারে আছে, যেখানে 100 একরের মধ্যে টার্মিনাল অপারেশন ইউটিলাইজড হবে এবং 200 একরের মধ্যে যেটি যে হ্যান্ডলিং এর ব্যাপার আছে রিমেইনিং সেটা স্যার হবে। মাননীয় এমপি মহোদয় যে কোশ্চেন করেছেন তাতে যে কমিউনিকেশনের ব্যাপার আছে, কমিউনিকেশন রোড অলরেডি স্যাংশন হয়ে গেছে স্যার, এবং রেলওয়ে যে কমিউনিকেশন আছে সেটা সেকেন্ড ফেজে হবে, এবং সমস্ত এনভায়রনমেন্টের যে ক্লিয়ারেন্স আছে সেটা স্যার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এটাই জানার বিষয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোনো রকম সহযোগিতা পাচ্ছি না। আমরা কোনো প্রোগ্রাম ফেললে আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট সেখানে আমাদের সহযোগিতা করে না স্যার, এটা সবচাইতে বড় প্রবলেম স্যার। আমরা হাজার কয়েকশো লেটার স্যার পেন্ডিং আছে ওখানে, কিন্তু পেন্ডিং লেটারে আমরা কোনোভাবে কোনো সদুত্তর পাচ্ছি না। আমরা এখনো পর্যন্ত অপেক্ষায় আছি। আমরা চাই স্টেট গভর্নমেন্ট স্যার আমাদের সেগুলো সদুত্তর দিক। ধন্যবাদ স্যার। Second supplementary, Shriman Samik Bhattacharya ji. Sir, second supplementary is very serious, sir. Sir, Kolkata Port Trust is the single largest landowner in the city of Kolkata with nearly 4,000 acres of land. It is a matter of record that around 170 acres of prime Portland is under encroachment and illegal occupation. A substantial portion of this encroachment is located in the Garden Reach, Metia Buruj and Khidirpur area, which has been publicly referred to as mini Pakistan by the mayor of Kolkata. Sir, Farakar Jomi. Sir, our question is very clear. Whether it is a land of Indian Railways, whether it is a land of ports, whether it is a land of DVC, सारे जगह फरक्का बैरेज का बात कर रहे थे, सारे जगह इनक्रोचमेंट चल रहा है। इसको उपाय क्या है? मेयर खुद बोल रहा है ये मिनी पाकिस्तान है। कलकत्ता शहर का मेयर तृणमूल कांग्रेस का बोल रहा है मिनी पाकिस्तान है। पूरा लैंड पूरा सर पूरा जमीन के ऊपर एनक्रोच कर रहे हैं। प्रॉपर्टी देवोत्तर प्रॉपर्टी सारा बिक रहा है पश्चिम बंगाल में। प्लीज क्वेश्चन तो पूछा आपने, क्या किया करना चाहिए? एमपी साहब ने जो बताया ये सही बात है। वहाँ के गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ये विषय में पूरा जगह इनक्रोच करके रखे हैं, लेकिन
लेकिन हमारे पोर्ट अथॉरिटी ने कोर्ट में केस किया हुआ है इसको छुड़वाने के लिए। हमारे पोर्ट अथॉरिटी ने केस किए हैं कोर्ट में छुड़ाने के लिए जोर जबरदस्त वहाँ दखल करके रखा जा रहा है जो नहीं छुड़ाया जा रहा है। हम लोग छुड़ा नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद सर। सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजिया कौन जी। Sir, before I ask my supplementary, I want to make an objection to the reference to mini Pakistan, sir. Please, that should be expunged from the record. You cannot call citizens of India as citizens. How can Fauziya Gandhi, you been specific about your question that has been. Sir, please, आप बैठिए. Please be specific about your question. I'm asking my question, sir. In view of the project aimed to decongest Kolkata dock system, what specific measures are in place to ensure minimal disruption to local livelihoods during construction? And what is the timeline for integrating the facility with National Waterway 1 for improved inland transport benefiting rural communities? How does the ministry intend to integrate sustainable practices such as eco-friendly dredging into the project to protect the Hooghly River ecosystem? And sir, what baseline data on environmental indicators will be used for posting commissioning assessments impacting local communities? Honorable Minister. Sir, it is right that we are giving the proposal to develop everywhere in the West Bengal. Unfortunately, not getting the NOC from there, but we can say that 23,000 jobs will be increased there, and we can give them the opportunity in the job. So this is right. Another last 10 years. We developed work more than 10,000 crore undertaken in West Bengal. Sir, there will be a DPC mode में काम चल रहा है और PPP मोड में भी काम चल रहा है. सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के द्वारा लिया गया. वेस्ट बंगाल में इंक्लूडिंग 73 प्रोजेक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तरफ से लिया गया है. कॉस्ट है जिसका 7,996 करोड़. 14 प्रोजेक्ट बाय दी हुगली कोचिन शिपयार्ड से लिया गया है, कॉस्टिंग 407 crore. Third, we like to thanks to our Honorable Prime Minister who taken the initiative to give the project to West Bengal, and it will be very augmentation for the West Bengal society and the all people. Thank you, sir. Fourth supplementary, Dr. John Britas. Thank you very much, sir. Sir, I will take 10 seconds to give a free advice to my friend. If he says that it is mini Pakistan, Islamabad will demand that territory. Yes. Please don't make some blunder. Don't make some blunder. Please specific about your question, John Britas. Everybody is doing like this, then how we have to pass on to the next question now. Sir, you are signing the paper. You are distracted. That's why I said that. Sir, my specific question. Please wait it. Honorable Cabinet Minister is that. Sir, please wait it, please. My specific question to the Honorable Minister is that we have a Vizhinjam port there for which the government of India gave 817 crore as VGF. Now, what has happened is that in no other cases they're demanding the money back. In this VGF, they have asked the Kerala government to pay back on NBV terms. I am coming, sir. You will understand. Please allow me to formulate. In this case, they want almost 12,000 crore back. My question to the Honorable Minister is that. When you are coming to your question, please come. Sir, the government of India bearing the cost for many verticals as part of this port, which is mentioned in the question. For example, EPC, they are bearing the cost. Considering the fact that no other port, including this port, is asked to pay back, will it take initiative to make sure that this VGF is not taken back from the Kerala government? The question is over? Yes, sir. Honorable Minister, please. Cabinet Minister, sir.
Sir, this is true that the chairman of Kolkata, he raised the mini Pakistan word on front of the media, sir. This is everywhere. There is a document. We can show that, sir. And although unfortunately, the question is relevant to the main question. You please answer. Otherwise, you please avoid it. Sir, although the main question is not pertinent to the main question, so I will offer to the member of parliament come to our office, join with us, as we can maintain, as we can show them what is the exact reality in there. Thank you, sir. The fifth supplementary, Shriman Kanat Purkayasta ji. You cannot instruct. You please sit down. You please sit down. You cannot instruct to the chair. No, you mind your words. You cannot instruct to the chair. You please wait there. No, you please wait there. You please wait there. You have no right to instruct to the chair. You take your chair. You take your seat. Yes. This is registered. Please. धन्यवाद सभापति महोदय. Nothing doing. Are you going to your seat or not? If you are not going to your seat, no, this is not correct. This is not correct. You cannot take the house for a ride. You go back. No. If you are not going back, then I will be forced to take some action. No, you are wrong. You are wrong. You go back. You are all pro-Pakistani. Please write. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि what are the measures specially taken by Indian Waterways Authority of India. If you are continuing like this, then I will be forced to take strong action against you. What do you are thinking? Every time you want to disturb others. 16. No, you go back. You go back now. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय. It is everybody's state, not your state alone. It is everybody's state. No. West Bengal is everybody's state, not only belongs to you. Please. No. Honorable, please take your seat. You put your question. You please put your question. Honorable member, please take your seat. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि what are the measures specially infrastructure development and dredging taken by Indian Waterways Authorities of India for smooth operations of cargo and transport in the National Waterways 16 of the Barak River in Assam. Please, my dear. You know very well you cannot raise a point of order during the question hour. Please, my dear. Honorable Minister. Respected Chairman, sir. Please, my dear. No, you cannot disrupt. You cannot disrupt the house like this. You please, my dear. Honorable Minister. Respected Chairman, sir. You please take your seat. You have no right to raise a point of order during the question hour. You please take your seat. Respected Chairman, sir. That is right. Honorable Purkayastha has raised a very, very important question. This is regarding the initiative undertaken by the Ministry of Port Shipping Waterways for the seamless movement of our different kind of vessel, cargo vessel, passenger vessel, and cruise vessel in the National Waterways 16 Barak. And the stretch of River Barak from Lakhipur to Bhangra, it is 121 kilometers. For the development of this particular area, the length of the river, we have started dredging and we have renovated the terminal at Badarpur and Karimganj so that the people, almost 50 lakhs people reside in the Barak Valley of Assam. And it is not only for Assam, but it is adjacent to the nearby state like Mizoram, Manipur, and Tripura. If Barak River is developed, then all, the state will be benefited, particularly our farmers, the people as a whole, the entrepreneurs, they will be benefited for the, transportation of their finished product from one part to the other parts.
with a very, very least amount of, expenditure, particularly logistic costs will be reduced to the inland waterways movement. So I believe that's the facility, particularly it is happening only because of the visionary Prime Minister Narendra Modi ji, because he loved the country, he loved the northeast part of India, and because of his special initiative, untiring effort, special support, the entire northeast in the last 11 years got the special status in the country, and now almost 5 crore people in the country, that part of the country, they have now come up with self-confidence because of the Honorable Prime Minister leadership, and now the entire region is developing faster. And number 2, because I must mention some of the important points here. As we all know, Honorable Prime Minister has always been, appealing to the people of the country that let us reform, perform and transform. With this kind of policy and program, the entire, particularly the 3 important sectors, that is EXIM trade, coastal shipping and inland waterways. All these 3 important sectors got surged up. And in the last 11 years, because of the transformative initiative, I'm coming to that point. Let me cite out exciting success story. In inland waterways, the cargo movement was limited to 18 million metric ton up to 2014. But under the leadership of Honorable Prime Minister, it went up to 146 million metric ton. Massive growth, 700% growth. Then if you talk about the operational waterways, it was limited to, during their regime, it was limited to 3 numbers only. Only 3 national waterways. Now, because of this transformative initiative, it went up to 111 altogether. So this is 870% growth. And investment, national waterways, during their regime, it was only 183 crores. But during the NDA regime, it is 1,700 crores. Let me, Jairamji, please listen. This is all happening. And if you talk in terms of cruise, then the cruise passenger was limited to 84,000 only. 84. Now it went up to 5 lakhs. That is a jump, 485%. Let me talk about the number of luxury cruise. It was limited to 3. Now it went up to 25. 633% growth. Minister. And if you talk about the lighthouse tourism, the limited footfall was... Please, your answer, please. Sir, I'll conclude. It was lighthouse tourism. The footfall was limited to 4.3 lakhs. Now it went up to 19 lakhs. That is the power of leadership, visionary leadership, dynamic leadership. And I believe you should all admit Now question number 107. Let me tell you one line. Complete, please. Let him complete one line only in what it goes to make difference. Sir, please. Sir, in the Vizhinjam, because of the spirit of cooperative federalism, Government of India, Government of Kerala, and also the Adani, it was a joint effort. Ultimately, that particular transshipment hub is signing globally. A recorded numbers of container had been handled within a year time. So that is the success story we could able to create. Thank you, sir. Now question number 107, Shriman Digvijay Singh ji. Question number 107, sir. प्रश्न संख्या 107। क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने के दृष्टिगत उर्वरक उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्धारित हरित हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, जबकि फास्फेट उर्वरकों के लिए आयात की जाने वाली समस्त अमोनिया की केवल 0.5 मिलियन टन मात्रा ही उसे प्रतिस्थापित कर सकती है। 7.24 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता वाली 13 नियोजित हरित अमोनिया नीलामियों में विजेता बोलीदाताओं, अभिनिश्चित कीमतों और प्रतिबद्ध खरीदारों का नीलामीवार ब्यौरा क्या है? और 2.5 मिलियन मीट्रिक टन आयातित ग्रे अमोनिया को हरित हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करने पर उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी कमी लाई जा सकेगी? Honorable Minister. प्रहलाद जोशी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। Table of the House, sir. First supplementary, Shriman Digvijay Singh ji. Thank you, sir. So the performance of the Ministry, New and Renewable Energy, in its ambitious
PM Kusum scheme has been dismal. It missed its capacity target by 70% and could not spend 80% of its budget. How would you achieve target of 5 million metric tons of green hydrogen production target by 2030 of India's announced green hydrogen projects which are currently operational? Honorable Minister. Sir, first of all, I would like to tell Honorable Senior Member that whether it is in PM Kusum या whether overall renewable energy, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में we have achieved total renewable energy 272 gigawatt as on date, sir. The total during their time, it was including hydro, it was 81 gigawatt. Now it is including hydro. Now it is 272 gigawatt, and solar energy was 2.8 gigawatt. Today it is nearly 136 gigawatt, sir. Sir, अगर politically बात करना है तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सर. दुनिया में we are the third largest renewable energy producer in the world today, sir. And पहले भी सूर्य था, sir. There was a sun before Modi could also come, but Prime Minister Modi recognized the power of the sun, and he made the poor people to understand that power, and he also supported that. Now there are in PM Kusum or PM Suryaghar, people are taking benefit. Now it has started now, and I would like to tell there are many states which are demanding more and more in PM Kusum. But as far as this is concerned, sir, sun, SU1 sun को recognize PM ने करके उसको गरीब लोगों को फायदा पहुंचाया. इन लोगों ने SON सन को प्रमोट करते हुए तब भी सूर्य था, लेकिन उनका तेज उन्होंने समझ नहीं पाया, सर. They are more bothered about SON sun, sir. PM Modi recognize SUN sun, sir. Now, second supplementary, Shriman Digvijay Singh ji. Sir, he has not answered my first supplementary. I hope he answers my second supplementary. Sir, as it stands today, we would be only using 0.5 million metric ton to replace the imported grey hydrogen in production of green ammonium for phosphate fertilizer. Our production target is 5 million metric ton of green hydrogen by 2030. I don't know how they will do it. What steps would you take to build market demand for green hydrogen and accelerate its adoption across different sectors? First and second supplementary together, sir. In green hydrogen, the total, I would like to tell very categorically that under the leadership of Prime Minister, the green hydrogen transition in India, we are not only we are the participant in the overall दुनिया में जो चल रहा है उसमें we are not participant. We are the people who are shaping it for the entire world. This is the situation today, sir. And out of that, 5 million metric ton का जो हमारा आज के दिन में टारगेट है, उसमें हमारा as on November 2025, 21 green hydrogen projects have been commissioned across the country with the total capacity of 8,300 TPA, sir. Overall, electrolyzer के लिए and put together hydrogen, 19,000 crores has been earmarked. We are well on our way. There is still time up to 2028, and we are doing it. And second is main question is related to the green ammonia. Green ammonia, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग अभी शुरू हुआ है, एक जगह हमने ऑलरेडी ग्रीन अमोनिया का जो भी अभी उत्पादन के लिए टेंडर बुलाया था, दुनिया में लोएस्ट प्राइस भारत में आया है, सर. ये भी मैं रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं. दूसरी बात, 0.5 MMT का जो बात किया है, एज ऑन डेट इंडिया हैज सक्सेसफुली टेंडर्ड द क्वांटिटी ऑफ 7.24 lakh ton per annum green ammonia production under the site mode 2A. Chairman, sir, I would like to tell you, till recently, this is the largest such tender of the green ammonia anywhere in the world, sir. This is what is achieved in green hydrogen. Green ammonia and green hydrogen both. Means 25-30% of the total ammonia required for the fertilizer. Now from 28, it will be through green ammonia, sir. This is the changes which are being brought in the recent past, sir.
And this is all happened very, very recently. That is true after 2014 and in particularly after the launching of National Green Hydrogen Mission by Prime Minister Shri Modi with an allocation of support fund, that is Viability Gap Fund, PLI, whatever it is called, with the 19,000 crore support. That is why things are moving. And every country in the world, sir, there are so many countries which the people are interested in offtake agreement also. AM Green and Unipar, Germany has signed firm offtake agreement supply of 250,000 metric ton per annum green ammonia, sir. Juno Jolos signed an offtake agreement with the Select Energy, that is also from Germany, with 600 TPD, about 219,000 metric ton per annum of green ammonia. L&T is a process of finalizing agreement with the Japan. ACME is in the finalization of with the, again Japan. People are demanding. I would also like to place it on record, sir. Recently, Honorable Prime Minister had sent me to the Davos. There are many people who wanted to meet me for this green hydrogen, which is a revolution taking place in India. And even about the people are interested to invest in it, and people are interested even invest in the renewable energy because they are seeing what is the growth happening in India, sir. Third supplementary, Dr. Sasmit Patraji. Honorable Chairman, sir, my specific question to the Honorable Minister is, he has mentioned in the reply regarding offtake fertilizer units and the selected green ammonia producers. The offtake units are either government or private, and the ammonia producers are primarily private. So therefore, what is the arrangement that the government has? Is it a two-party agreement that has been signed, or is the government having a tripartite agreement? What are the responsibilities and the liabilities of the private parties in this regard, especially because of the green ammonia producers, sir? Honorable Minister. Sir, as far as green ammonia 7.24, what I mentioned, sir, that is purely for the fertilizers. There are fertilizers company and there are who are who are already participating in this entire process of producing green ammonia and green hydrogen, sir. And interim procurement will be through SECI. The SECI is floating the bid, and either from fertilizer units or from any private people who want to invest as far as production of green ammonia is concerned, even for green hydrogen is concerned, they will produce you, and green hydrogen cannot be transported. In its derivatives, whether it is methane or ammonia, in that form it will be transported to whoever places the firm order on them, they will supply to them. This is a simple system, and it is quite appreciated by the market also. Next supplementary, Shriman Mayank Nayak ji. सोमनाथ सर, थैंक यू सर। सर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ये रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने देश में सबसे पहला सोलर पार्क बनाया। विंड एनर्जी के माध्यम से इस एनर्जी में नया प्रोडक्शन गुजरात के द्वारा शुरू किया था। आज देश पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा है। तब मैं माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि भारत में अब तक कमीशन किए गए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की वर्तमान परिस्थिति क्या है और परिणाम स्वरूप आयात में कितनी बचत होने की संभावना है, क्योंकि पिछले वर्षों के दौरान सोलर पावर की जो टैरिफ में किस तरह का परिवर्तन भी आया है और ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बजट 2026 में कैसा उसका प्रयोजन है, वो माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, बहुत डिटेल में प्रश्न उन्होंने पूछा है सर। आई एम थैंकफुल टू हिम। मैंने पहले भी बताया, टोटल 21 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स हैव बीन कमीशन्ड अक्रॉस द कंट्री। एक में JSW स्टील में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एट विजयनगर कर्नाटक में शुरू भी हुआ है सर। ये प्रोजेक्ट जो है डाइवर्स एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सर। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए सर, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिफ्यूलिंग स्टेशन है सर। रिफ्यूलिंग स्टेशन के लिए बहुत बड़ा, शुरुआत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। स्टील प्रोडक्शन में हम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ब्लेंडिंग विद द नेचुरल गैस, ये तो ऑलरेडी हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स इट इज ए ग्रे हाइड्रोजन, इसका ब्लेंडिंग
इंदौर वगैरह में, बहुत जगह गुना वगैरह में शुरू हो गए सिटी गैस में। फर्नेस फ्यूल, रिफाइनरी ऑपरेशन, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और पायलट प्रूफ कंसेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन ये शुरू हो गया सर। मेजर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग गेल का ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट एट गुना, मैं हरदीप जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इसका ब्लेंडिंग, वेदर ब्लेंडिंग इज पॉसिबल, हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग इज पॉसिबल और नॉट, इसको सक्सेसफुली गेल ने गुना में करके दिखाया है एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड सक्सेसफुल सर। तो ऐसे ही 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट हैव बीन commissioned with the total capacity of 1,135 megawatt sir. So second sir, overall जो cost था, because of the scale, because of the speed of the Prime Minister, 2013-14 में it was nearly about 11 rupees per unit. Today the discovered price is recently in Madhya Pradesh it has come out 2 rupees 15 paisa sir, only because of the scale. And also अभी और एक हमने नया प्रयोग शुरू किया है, सिर्फ सोलार का और विंड का मत करो, इसके साथ ही साथ फॉर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टेंडर फ्लोट करने के लिए हमने एजेंसीज को कहा है, जो टेंडर बुलाता है, बिड फ्लोट करता है। Even in that, the recently the highest price what we have discovered is, the average price what we have discovered, lowest price what recently we have discovered is 2 rupees 70 paisa to 3 rupees 30 paisa with the battery storage. Along with battery, wind altogether, it is not more than 4 rupees to 4 rupees 50 paisa. It is really a transformative. It is bringing a biggest change in the power sector. Only there are some, of course, I am not telling there are no issues. For other issues, we are also trying to AI-led solution, all such things we are trying, sir. And third is, sir, as far as budget he has asked. Budget, sir, all put together, I am thankful to Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. The total budget till 2014, it was 956 crores, sir. And this year, it is 33,000 crores, sir. And all the previous year, it was 26,000, 27,000. Last year, it was 26,000 crores. Now it is 33,000 crores. From 2000 to 2004 to 14, total budget to NRE in all the 10 years put together, it was 8,815 crores. Whereas in 10 years of Modi government, it is 1,26,301 crores, sir. And duty exemption for battery storage, that is also now exempted. And there are critical minerals. इसमें critical minerals हमको बहुत चाहिए sir. Rare earth permanent magnet चाहिए for renewable energy and its all other derivatives like hydrogen derivatives. And for that manufacturing of that, and even in wind energy, we need many rare earths and even rare earth magnet, permanent magnet also. For that, critical minerals duty exemption for processing equipment, that has been allowed, sir. Overall, हमारे बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो इसके अलोकेशन किया है, that is why India is become overall third in solar and fourth in overall renewable energy in the entire world, sir. This is the greatest success story which we can showcase. Not as only the Prime Minister himself has said, whatever भारत ने जो अचीव किया है सिर्फ मोदी जी का ही अचीवमेंट नहीं है, कम से कम ये भारत का अचीवमेंट करके हमको मान के चलना है मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है। Srimati Ashok Ranjini Patel ji, for giving me an opportunity. Some studies by CPCB and international research bodies have highlighted that excessive use of chemical fertilizers and containing nitrogen and phosphorus leads to leaching into rivers and causing eutrophication, oxygen depletion, and large-scale damage to aquatic life, while over-application has also resulted in nitrate contamination of groundwater, which is affecting the drinking water effectively in several regions. Further, reports indicate that effluents from
fertilizers manufacturing units add to water pollution when industrial discharge norms are not strictly followed. So in that case, what measures Honorable Minister is going to take? For some other questions, she might have prepared the supplementary, sir. This is not at all that question, sir. That's why I referred, it is 107, the question number 107, she has given the supplementary. Anyway, now question number 108, Srimati Sumitra Palmik ji. प्रश्न संख्या 108। क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभ की गई सुपोषित भारत पहल और विशिष्ट आयुष आधारित आहार अंतःक्षेपो आयुष आहार का ब्यौरा क्या है? ख क्या मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की समुचित देखरेख सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से गर्भ संस्कार मॉड्यूल को प्रोत्साहित कर रहा है? और ग मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में कमजोर वर्ग के लिए आयुष 64 तथा अन्य रोग प्रतिरोधक क्षमता संवर्धक कीटों के संवितरण से संबंधित आंकड़े क्या हैं? Now, first supplementary, श्रीमती सुमित्रा पॉलमिक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आयुर्वेदिक औषधियां हमारे देश की संजीवनी हैं। देश ही नहीं विदेशों में इन औषधियों के प्रति कोरोना के बाद में विश्वास बढ़ा है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि मंत्रालय आयुर्वेदिक दवाओं के मानकीकरण और क्वालिटी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर प्रताप राव गणपत राव जाधव, आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आयुर्वेदिक दवाओं का मानकीकरण के बारे में जो यहाँ पर माननीय सदस्य ने यहाँ पर पूछा है, तो इसके लिए हमारी CCRA जो संस्था है उसके माध्यम से भी इस दवाओं का मानकीकरण किया जाता है और आयुष लाइसेंसिंग और सुरक्षा नियामक भी हमारे आयुष विभाग ने बना है कि जिसके माध्यम से आयुर्वेद, सिद्धा, स्वारिक्पा और यूनानी दवाओं की बिक्री के लिए और निर्माण का लाइसेंस जारी करने का प्रावधान औषधि नियम 1945 के नियम 158 ख के तहत किया गया है, जिनमें सुरक्षा, अध्ययन और प्रभावशीलता का साक्ष्य अनुभव अनिवार्य है। औषध नियम 1945 के नियम 168 के अनुसार निर्माता को आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी दवाओं के निर्माण के लिए मानकों का अनुपालन करना होता है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमती सुमित्रा पॉलमिक जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी बताएं कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से भी कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आयुष वीजा वहां पर लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हजारों विदेशी लोग आयुष के माध्यम से उपचार करने के लिए हमारे देश में आते हैं और बहुत सारे बाहर के लोग ऐसे हैं कि हमारे कि जो टूरिस्ट वीजा निकाल कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आयुष के माध्यम से उपचार हमारे देशों में बहुत सारे वेलनेस सेंटर चलते हैं, उसमें भी किए जाते हैं और ये वेलनेस सेंटर को बढ़ावा देने के लिए भी आयुष मंत्रालय हमारा उस पर विचार कर रहा है कि जिसके माध्यम से हमारा मेडिकल टूरिज्म भी अच्छी तरह से वहाँ पर बढ़ जाए। इसके लिए निश्चित रूप से हम वहाँ पर कदम उठा रहे हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान विकास रंजन भट्टाचार्य जी। Yes, I would like to know what is this concept of Garv Sanskar? Has it any rational and scientific foundation? Because India wants to see a nation of scientific temper. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न पूछा है कि ये प्रश्न से संबंधित नहीं है, अगर उनको जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुझे मिले। मैं डॉक्टर फॉर्मर जसवंत सिंह जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि पूरे देश में 3.13 लाख पोषण वाटिका बनाई गई है। तो मेरा मंत्री जी से क्वेश्चन है कि आम आंगनवाड़ी से ये पोषण वाटिका कैसे अलग पड़ती है? What are the salient features of पोषण वाटिका
और अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? थैंक यू सर। माननीय सभापति महोदय, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत स्वास्थ्य, पोषण और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष पद्धतियों को एकीकृत किया गया है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से शुरू किए गए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान पंचायत स्तर पर आयुष से जुड़ी पोषण प्रथाओं को भी बढ़ावा देता है और आयुष आहार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2022 के आयुष मंत्रालय के परामर्श से FSSAI द्वारा 5/5/2022 को अधिसूचित भी किया गया है। आयुर्वेद आहार 17/12/2025 को पारंपरिक चिकित्सा के दूसरे विश्व स्थान संगठन के वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया है। ये जो आयुर्वेदिक आहार पोषण वाटिका है, तो देश भर में कृषि एवं देखभाल केंद्रों में या उनके आसपास 3.13 लाख से अधिक पोषण वाटिकाएं विकसित की गई है और जिसके माध्यम से निश्चित रूप से आंगनवाड़ी के माध्यम से महिला हो, गर्भवती हमारी माता हो या छोटे बालक हो, उनके पोषण के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ, महिला और बाल कल्याण विभाग के साथ में हमारा आयुष विभाग भी सहयोग करता है। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय यादव जी। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बिहार के आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में CAG की रिपोर्ट के अनुसार 82% पद रिक्त हैं, यानी बिहार के आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना दवाई है। 82% बहुत बड़ा फिगर है महोदय। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब बिहार के आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में 82% पद रिक्त है, तो वहां के आयुष स्वास्थ्य केंद्रों की वर्तमान स्थिति क्या है? और आपके माध्यम से महोदय पूछना चाहूंगा कि ऐसी गंभीर स्थिति को देखते हुए क्या सरकार बिहार में आयुष सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशेष समयबद्ध कार्य योजना पे कार्य कर रही है क्या? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार के बारे में यहाँ पर पूछा है, प्रश्न से संबंधित नहीं है तो भी मैं इसका जवाब यहाँ पर दे दूंगा कि अभी तक 2015-16 से 2025 तक बिहार को 134 करोड़ रुपए न्याम के माध्यम से दिए हैं। लगभग 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के वहां पर कार्यशील है और 50 बेड का एक अस्पताल पटना में उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और दूसरे, ये देखो उसका भी जवाब दे रहा हूँ। देखो ये जो स्वास्थ्य की सेवा देना, ये राज्य का विषय, ये राज्यों का विषय होता है। हमारे आयुष मंत्रालय सिर्फ राज्यों को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और टेक्निकल सपोर्ट भी हम यहाँ से उनको देते हैं। जो जगह होती है वो भरने की जो प्रक्रिया होती है वो राज्य सरकारें करती है। टीम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 109 श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। 109। प्रश्न संख्या 109। क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूविन पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों और गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? ख क्या वर्ष 2025 में प्रत्येक टीके की खुराक के लिए QR कोड युक्त टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे? ग यदि हाँ, तो जारी किए गए ऐसे प्रमाण पत्रों की कुल संख्या कितनी है? घ ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी टीकाकरण खुराकों के बारे में लोगों को सूचित करने हेतु कितने SMS अनुस्मारक संदेश भेजे गए हैं? अंग क्या यूविन पोर्टल पर सहायता से ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिन्हें पूर्व में कोई भी टीका नहीं लगाया गया था? और च यदि हाँ, तो ऐसे शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या कितनी है जिन्हें टीकाकरण के दायरे में लाया गया है? ऑनरेबल मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री। The statement is laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में डिजिटल गवर्नेंस और स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही
और अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक सेवाएं पहुंचाने के लिए कई तकनीकी नवाचार किए गए हैं। यूविन पोर्टल इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसने टीकाकरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और ट्रैक योग्य बनाया है। क्या माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि यूविन पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम डेटा उपलब्ध होने से राज्यों और जिला स्तर पर टीकाकरण की योजना बनाने एवं संस्थानों के बेहतर आवंटन में किस प्रकार की ठोस सुधार देखने को मिले हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि हमारा जो यूविन पोर्टल है ये एक नेशनल रिपोजिटरी है हमारी सारी इम्यूनाइजेशन सर्विसेज के लिए, और एक ऐसा सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए उपयोगी है, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए भी, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी। यानी हर वैक्सीनेशन सेशन को ट्रैक करना, उसे रिकॉर्ड करना और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन सेशन को प्लान करना, ये तीनों काम करने में ये बहुत ही सुविधाजनक है। और इससे एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है कि आज हमारे जो भी कार्य पहले मैन्युअली हुआ करते थे, पेपर बेस्ड तरीके से हुआ करते थे, राज्यों में, जिलों में, खास तौर से जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे, उन्हें कागज पर रिकॉर्ड रखना पड़ता था, आशा हो, एएनएम हो, लेकिन आज ये सारे रिकॉर्ड जो हैं वो डिजिटाइज हो चुके हैं। और जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आज वो इस पोर्टल के जरिए उन्हें ये सहूलियत हो गई है कि वो उनके पास एक लाइन लिस्टेड डेटा होता है। हर एक बच्चा, हर एक महिला, हमारा जो कोहॉर्ट है वो 2.54 करोड़ बच्चों का है और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन का है। तो हर केस को हम इस पर उसके स्टेटस को जान सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं, अपनी एक ड्यू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं और इस तरीके से अधिक हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज आज हो रहा है। और इस हमारे प्रयास के जरिए जो हमारा फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है आज वो 98.7% पहुंच गया है। हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने टारगेट सेट किया था कि देश के अंदर जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत जो हमारा टारगेट है वो 90% से अधिक हो। लेकिन यूविन पोर्टल आने के बाद क्योंकि एक केस को ट्रैक करना आसान हुआ है तो उससे हमारा जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो 98.7% पहुंच गया है और इसका वृहत असर हमें MMR, IMR, नियोनेटल मोर्टेलिटी और अंडर 5 मोर्टेलिटी की गिरावट में भी देखने को मिला है, जो आज जो वैश्विक दर पे गिरावट हो रही है उससे बेहतर है। तो जिले में, राज्य में आज बेहतर ढंग से फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर पा रहे हैं और एक केस की बेहतर निगरानी कर पा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुरूप ग्रामीण और वंचित वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यूविन पोर्टल के माध्यम से शून्य खुराक बच्चों की देख की पहचान कर उन्हें टीकाकरण के दायरे में लाना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यूविन पोर्टल के माध्यम से शून्य खुराक बच्चों की पहचान और टीकाकरण से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में सरकार को क्या सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा भविष्य में इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की क्या योजना है? अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि 0 डोज जिसे शून्य खुराक कह रहे हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें जन्म के 1 साल के भीतर जो पहली डोज पेंटावेलेंट वैक्सीन की 5-in-1 वैक्सीन की मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है। पहले देश में ऐसे बच्चों की संख्या अधिक थी। वर्ष 2013 में 26 लाख ऐसे बच्चे थे जिन्हें हम शून्य खुराक बच्चे कह रहे थे। इस पर हमारी सरकार ने अपने प्रयासों को केंद्रित किया। यूविन पोर्टल आने के बाद खास तौर से ऐसे बच्चों की ट्रैकिंग हमारे लिए आसान हुई और जो संख्या 26 लाख हुआ करती थी 2013 में, वो सरकार के प्रयासों के चलते आज 2025 में 8.5 लाख पर पहुंच गई है।
2023 में 0 डोज बच्चे 0.11% हुआ करते थे, आज वो घटकर 0.06% पर पहुंच गए। और ये जो हमने उपलब्धि हासिल की या ये जो प्रगति हम कर पाए हैं शून्य खुराक बच्चों को की संख्या को कम करने में, उसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास किया। देश के अंदर ऐसे 11 राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ऐसे तमाम राज्यों के 143 जिले आते हैं। ये वो जिले थे जिसमें वैक्सीनेशन का कवरेज कम था और 0 डोज बच्चों की संख्या ज्यादा थी। यहाँ पर हमने मिशन इंद्रधनुष बहुत तेजी से उसका संचालन किया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष चलाया और उसकी 12 फेजेस में हमने स्टेट टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स बनाई ऑन इम्यूनाइजेशन और इसके जरिए 5.46 करोड़ बच्चों को और 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन को हमने इसमें सफलता मिली, इनको हमने वैक्सीनेट किया। MMR का जहां मैंने पहले भी बताया सर, इसका व्यापक असर हमें MMR के ऊपर देखने को मिला है। आज MMR दुनिया में जो MMR की गिरावट हो रही है वो 86% है और सर दुनिया में जो गिरावट है वो 48% है, लेकिन भारत में जो MMR की गिरावट है वो 86% है। अंडर 5 मोर्टेलिटी में दुनिया की गिरावट 61% है, भारत के अंदर गिरावट 78% है और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में दुनिया में गिरावट 54% है और इंडिया में गिरावट 70% है। तो आज भारत एक उदाहरण बनके दुनिया के समक्ष पेश हुआ है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके हम अपने जो यूनिवर्सल टीकाकरण अभियान है उसको और सफलता से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अजय कुमार मित्तल महोदय, जून 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी भी 14,40,000 बच्चे जीरो डोज बच्चे हैं जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा। हालांकि जो सरकार का प्रयत्न है यूविन पोर्टल का वो सराहनीय है। जो ये डिजिटल जो 0 डोज बच्चे हैं सरकार उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जबकि वो ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर्ड भी हैं और हमारी मैन पावर भी उधर होनी चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि इन बच्चों को और जो बच्चे अभी रजिस्टर्ड नहीं है और उन तक हमारी एक्सेस नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, उनको पहुंचने के लिए सरकार क्या विशेष प्रयत्न कर रही है ताकि दूर दराज के इलाकों में भी ये बच्चों को डोज दी जा सके और उनको वैक्सीनेट किया जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर मैं पुनः दोहराना नहीं चाहूंगी, किंतु मैंने 0 डोज के बच्चों के संबंध में जो प्रगति है उसके आंकड़े अभी रखे कि हमारे 26 लाख हुआ करते थे 2013 में, आज वो 8.5 लाख पहुंच गए हैं। आपने आंकड़ा कहां से प्राप्त किया मुझे पता नहीं, लेकिन ये 8.5 लाख की संख्या है और 0 डोज में गिरावट हो रही है। खासतौर से जो आपने पूछा कि जो माइग्रेटरी है पॉपुलेशन ऐसी होती है या जो दूर दराज के रहने वाले जो हमारे पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं वहां पे जो बच्चे छूट जाते हैं, अब हमने जब ये यूविन पोर्टल लागू किया है तो उससे हमें सबसे बड़ा लाभ इसी आबादी के लिए मिला है जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है और जो हार्ड टू रीच एरियाज में रहने वाली पॉपुलेशन है। इन दूर दराज के इलाकों में अब हमारे जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जाते हैं, एएनएम आशा कोई भी जाते हैं, ऑफलाइन मोड पर भी वो डेटा एंट्री कर सकते हैं और क्योंकि हमें यूविन पोर्टल पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि कितना वैक्सीनेशन आगे बढ़ा है, कहाँ वैक्सीनेशन, कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जिसमें वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, हम उसके लिए स्पेशल वैक्सीनेशन सेशंस प्लान करते हैं ऐसी खास साइट पे जहां पे वैक्सीनेशन में हमें कमी देखने को मिलती है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए अब देश भर में एनी टाइम एक्सेस एनीवेयर ये अब उपलब्ध है क्योंकि इसका सिटीजन सेंट्रिक मॉड्यूल है। तो कोई भी ऐसा पॉपुलेशन ग्रुप, कोई भी ऐसे माता पिता जो एक जगह से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते रहते हैं, अगर उन्होंने पहली डोज एक जगह पे ली है तो देश के अंदर कहीं भी दूसरे गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी पर वो जाकर
दूसरी डोज बच्चे की ले सकते हैं। इसके लिए उनका एक यूनिक आईडी क्रिएट होता है, एक चाइल्ड आभा आईडी क्रिएट होता है। हर माता पिता को हम रजिस्टर करते हैं, उनका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। उसके आधार पर देश के किसी भी कोने में किसी भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पर जो हमारी एएनएम है वो उस आईडी के माध्यम से किसी भी अनवैक्सीनेटेड बच्चे को ट्रैक कर सकते The House stands adjourned to meet at 2 p.m. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट came to you from the Delhi station of Akashvani. Hei hi Akashvani lunglei ani tuna hian zandar som le minute som nga paruk ani a vo in February ni som tholeni tana kan hun voi ni na alo topta apuang tu ar lanil nei control room in charge lalrem ruata sailo kan hun mun minman